Before we move on to our next session, we have a very short audio visual to play out just to tell you a little bit more about Network 18. Have a look. What's new about news? Nothing. That's until we stepped onto the scene. Instead of playing the game, we became the game. We reach 700 million people every year via TV and a whopping 320 million per month through digital properties. How did we do this? We went global. Forging partnerships with the biggest names in the media industry like CNN, CNBC and Forbes. Partnerships that are dominating their category. Our flagship English news channel CNN News18 blew past the limits of what's possible, reigning as the #1 news channel for over 52 weeks. Our national brand, News18 India, has more viewers than even popular entertainment channels and is India's #1 Hindi news channel. When it comes to numbers and trends, we mean business, so that you stay on top of your business. That's why CNBC TV18 doesn't just lead in the business news category, it is the category, commanding 96% of the market share. And our Hindi business channel, CNBC Awaaz, has been the trusted partner for traders for 19 years running, delivering swift market analysis that has made it the preferred choice for influential voices in the country. Our channel, CNBC Bazaar, dominates the Gujarati business news landscape. We've expanded into the beating heart of Bharat, speaking many languages and the truth, even as several of our regional channels rule the charts. While we dominate the airwaves, we've kept our fingers on the digital pulse. Our digital brands are platforms, not just websites. We curated informed opinions on first post, creating premium properties that are expanding our global reach and presenting India's voice to the world. And with Money Control, we're blurring the lines between media and tech, straddling everything from news, data, analytics to transactions, creating products that help Indians multiply their wealth. Money Control's engagement metrics and app downloads are greater than all competition put together, making it the biggest news subscription product in India. But we're not just focused on numbers. We want to change lives, one campaign at a time, going big on purpose, creating initiatives that matter. We are changing India through Local 18. We've extended our reach to small towns, villages, gullies, and mohallas, telling stories from the grassroots, creating access to untapped markets. We are Network 18, where news breaks on all platforms, made possible by converged digital-first newsrooms. We put the new in news. Rightly said, we put the news first, we mean business as we endeavor to change lives. Ladies and gentlemen, let's move on to a conversation on a topic that has become a visible sign of Bharat's transformation. The flight status display board at any airport these days in our country makes for a fascinating sight. Tier 2 towns and cities now clearly outnumber the metro and state capital destinations as more Indians are taking to the skies. This data reinforces this. In fact, the commercial fleet strength in India has gone up from 395 in 2014 to 714 in 2023. That's just vaulting by nearly 81% as millions crisscross the country's firmament. Now, there are also 148 airports, fully functioning commercial airports in India, which has gone up from a dismal 74 in 2014. Would you believe that? Clearly, there is much more to our country than metros and big cities. The lead up to the very successful G20 summit last year stood out for weaving in a unique socio-cultural flavor, showcasing this distinctive Indian geographical and cultural richness and diversity. Please welcome our next guests. We are so happy to have amongst us Mr. Amitabh Kant, G20 Sherpa, India, and Prasoon Joshi, poet and a famous lyricist, screenplay writer, and noted filmmaker, for a session that's titled Incredible India,
Destination Bharat in conversation with News 18's Rahul Shivshankar. Rahul, could you kindly come on stage and welcome the guests? Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. We had a great start to the morning. Let's have some energy there. Very good morning, everybody. Thank you for being here. It's going to be an exciting day as we dive into Bharat. And who can ever forget Mr. Kant when India led the presidency of the G20 for the first time, that descriptor appeared on all our screens, the Prime Minister of Bharat, Narendra Modi. Let's discuss this brand transition and what it means and how we can sort of interlocute better with Bharat. Mr. Khan, tell us first about this conscious decision to spin India's presidency at the G20 around brand Bharat. And what was the principal aim of this? We were told a little story about how the Prime Minister actually wanted this event to be spread across geographies. What was that for? So, Rahul, first of all, when G20 is held, it's normally held in 1 or 2 cities. The Prime Minister's vision was that it should be a people's presidency. Take it to the people of India. Take it to every state of India. So we took it to 60 cities of India. And we used that opportunity to improve drainage, sewage, solid waste, roads. We cleaned up the lakes, the backwaters. We really transformed India. And we also used that opportunity to spread local culture, one district, one product. We involved the people of those particular districts, of those particular schools, colleges. We made it a pan-India presidency. Let me ask you this. This is interesting because you're, of course, brand guru. You create brands. I want to ask you this because while I was researching, I came across a couple of comments that were made by Mr. Amitabh Kant's college mates, Shashi Tharoor and others. And there's been so much talk about India, that is Bharat, of course, but Bharat, that is India. And people say, you can't do away with India. It's too big a global, internationally recognized brand. What do you believe? Has the time come for Bharat to be, at some level, turned into a slogan to attract people from all across? And if you were given that responsibility, you've just been given the responsibility, of course, to manage the Bharatiya Janata Party's campaign. But if you were asked to evolve a campaign around Bharat, what were the ingredients? ये भारतीय जनता पार्टी आपने कहा, इसका नाम इंडियन जनता पार्टी कैसा लगता है आपको? See, the question is, what you call the nomenclature words is, what you feel is very important. Deep down, what you feel. What is the country you feel about? What is the ethos you feel? What it evokes? It's not only semantics. It's also, it's certain, when your tongue moves in a certain way, and I think the experts will tell you there is a neurological path which it follows, and hence a certain imagery is evoked. So when you pronounce Bharat, a different imagery is evoked. And I think that's very, very personal and important imagery for me. So for any cost, I would never give up Bharat as a name because it is deep down ingrained into what we believe the country is. It doesn't mean that India comes in parlance or people refer to it in their local languages the way. I think that's a different sort of practice. Practice and emotion and belief. I think we need to understand the semantics of it from that. So it's not that you will shun things. In fact, I believe in assimilation. देखिए क्या होता है, आप भाषा की बात करते हैं. Now, you have a new word which says SMS, which also means messaging. अगर SMS शब्द हिंदी की भाषा के शब्दकोश का हिस्सा बनता है तो मुझे बहुत खुशी होती है. बिकॉज अपनी बाहें आप फैला रहे हैं, अपना आकाश वृहत कर रहे हैं, यू आर मेकिंग योर स्काई लार्जर. लेकिन वो SMS शब्द अगर संदेश शब्द की हत्या करके आता है
तो मुझे प्रॉब्लम है। आई हैव, जहां पे संदेश से आएंगे वहां संदेश से ही आएंगे, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस कोएग्जिस्टेंस, आई थिंक दिस assimilation is what how I think about it, because it evokes a certain feeling and those feelings are important. शब्द जो है वो संस्कृति का कैप्सूल है। जब एक शब्द मरता है तो उसके साथ उसकी संस्कृति जुड़ी हुई मरती है। ये आपको सारे लिंग्विस्टिक्स बता देंगे। इवन अ पर्टिकुलर वर्ड डाइज, how many emotions and how many feelings and how much of knowledge, information dies with it, because it is a capsule of that culture. So I think we have to make sure that, you know, we inject and infuse life in words, और जो गायब भी हो रहे हैं उनको वापस लाएं. That is what my approach is. So it's a complex subject. What should take precedence? I think it should be left to people to finally see what they feel. I think their feeling is more important. I think the names belong to them. The language belongs to people who practice it. Let me draw you into this because Amitabh Khan, speaking in tangible terms, the emphasis today is around projecting our nation as a fast, modernizing, innovative country amongst the comity of nations. And many people are using the term Viksit. The Prime Minister himself uses it. It sort of gives us a feeling of, as he says, energy. But Bharat invokes a sense of earthy nostalgia. At least that's what a batchmate of yours in college, Piyush Pandey, another brand guru, has said. So how do we contemporize brand Bharat? So, you know, मेरे विचार से जो हमने अचीव किया है, you know, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटाइजेशन में, क्लाइमेट चेंज में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जो कुछ अचीव किया है पिछले 8-9 सालों से, so there's a great sense of national pride, huge sense of, so the vestiges of colonialism have gone away. We are not aping the West anymore. We are going back to our roots. That's very clear. That we want to be a modern, progressive nation based on our own strength, on our own civilization. And I think Bharat gives you that strength that we are a strong nation and that Bharat, the time is now. It has to be ambitious, it has to be aggressive, it has to be aspirational. That is what the message goes out. So let me ask you, because Mr. Khan, people in the opposition say that the NDA's obsession with this concept, Bharat, is essentially about a political messaging to its core base. It imagines a Rashtra with sort of Hindu sensibilities and characteristics. Now, how do you respond to that? It's also very forward-looking. It's also very progressive. It's also very modern when you open up, you're opening up your space sector, you're opening up your drone sector, you're opening up your robotics sector, you're doing, the startups have grown by leaps and bounds by 20x. In the number of incubators have grown by 15x. You know, your economy is growing at 8.5% for the last 3 quarters at a time when there is a global slowdown. So all this also reflects the confidence of a young, vibrant India, of a very dynamic young India. The average age is just 29. Why should we be caught up in just looking at what the West's perspective on India is? We are confident that we are a Bharat. Prasunji, let me ask you this. But इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा कि progress and what people feel, everything aside, what is authentic is what I am interested in. And Bharat is authentic. India is not. See, authenticity, now you say politicization. Politicization versus political ideology. Now, if there is an ideology which is true to itself, where it emanates from, and it chooses to use those metaphors and those, what's wrong in it? It's honesty, it's transparency. I don't consider this, you know, debate when it gets polarized. I think I personally have, माँ को मैं माँ के ही नाम से बुलाता हूँ, okay? और आप जिस नाम से सहज हैं, वो आपका नाम है, और मैं भारत से सहज हूँ. India के लिए तो incredible use किया जाता है. They've used the term incredible. So I just wanted to ask you this, because what would be a tagline for Bharat, for example, that will resonate across? You already have incredible India, which is in its own sense so alluring. So incredible,
was a tourism brand, is a tourism brand for India, which we started when Mr. Vajpayee was the Prime Minister of India. And it was meant to promote India as a tourism destination. But here you're talking about brand building of a country. And, you know, branding works best when you differentiate itself and you go back to your own, you differentiate in terms of your own inherent strength. And your inherent strength means your ancient civilization. There has to be a sense of pride on what you are achieving right now. And to my mind, it's also about encapsulating all that you have achieved in terms of many, many aspects of your growth, from you know, infrastructure to climate change to digitization, the quantum leap that we have made. And to my mind, that's about Bharat. The time is now. It's now to really leapfrog. So let me ask you this. What would be an effective slogan which at some level gives you this sense of genuine authenticity? Yes, what would you come up with? On this spot, I think you were asking me for slogan earlier also. So I'm saying मुझे ऐसे ही दिमाग में जो आता है अभी, गूंज रहा है भारत. और इसको मैं, I can see a campaign there, like यहाँ से जो टूरिस्ट आ रहा है वो भी कह रहा है मुझ में गूंज रहा है भारत. और आप विश्व स्तर पर देखें और देश के देखें, गूंज रहा है भारत. भारत का प्रताप, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान, भारत की everything about our country, it's resonating, reverberating. I feel right now, if you ask me instantly, I mean, this is an exercise which we normally sort of, that's a profession, you're asking it to do for free. Well, someone is paying you now, I believe. Someone is paying you. BJP is going to pay you for that's obviously building their political strategy. So how is that? Of course, when it happens, and Announcement we are looking forward to the challenge. I think there are some fabulous people out there, you know, who are in the committee and in the organization. Great minds, I would say, BJP has. And I think it will be immensely a learning exercise for me personally as well, has always been. And I think work is a way of our engaging with life. I think we look forward to the challenge. Well, it's very interesting that you've got this assignment at a time when many people say that BJP doesn't represent everyone in this country. It only represents a very few bunch of people who are allied to a particular kind of exclusivist idea of India, etc., etc. So how are you going to broad base the BJP's appeal? आप लगता है एक किनारा लेके बैठे हुए हैं. मुझे नहीं लगता कि, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता. I mean, लेश मात्र भी नहीं लगता कि जब आप भारत कहते हैं तब भी नहीं लगता. मुझे लगता है कि ये भारत का डिबेट जो है आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ाते रहे, लेकिन अगर आप समझें तो उसकी आत्मा में आपको समझ में आ जाता है कि भाई एक संस्कृति होती है, देश की आत्मा होती है, और वो संस्कृति को हम जन्म देते हैं, हमारे हाथों से बनती है, उसमें जो भी है वो सब हमारा है. तो उसमें किसको कहाँ पर यूज़ करना है, उसकी भारत कहाँ कह रहे हैं आप, इंडिया कहाँ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो इनक्रेडिबल इंडिया कहेंगे, इनक्रेडिबल. आई थिंक ये जैसे जैसे इवॉल्व होता है ऐसे ऐसे लोगों के थॉट्स क्लियर होते हैं. रही बात की पार्टी किसकी है, आई थिंक आई वुड से एनीबडी हु इज ऑपरेटिंग एज अ पार्टी वुड लाइक टू बी, एंड आई थिंक मैं समझता हूँ बीजेपी सबकी पार्टी है. I think they're trying to, and look at our Prime Minister, he tries to reach out to everyone. I was with him with the youngsters at the Creators Award, Young Creators, Content Creators Award. And I could see that young 17-year, 20-year, 25-year-old boys and girls, how they were sort of from across the country, who are not, they don't have knowledge of politics that much, but how they were gravitating towards it. I think intent is there. Now how far people have gone, how much road to cover, you can talk about those things. You can't be illusionary about those things. But intent of BJP is to be a party of everyone in this country. In fact, they have global ambitions. मैं इसलिए भारतीयता को मानता हूँ. देखिए, भारतीयता के मूल में हमने G20 में, मेरा सौभाग्य रहा कि इनके जैसे माइंड के साथ मैंने काम किया. G20 में I did the branding and advertising and campaign with him. He was leading it. Now, if you see, हमने वहाँ पे कहा वसुधैव कुटुंबकम. In tourism today, I think this
For a long time, but to understand, हमने क्या किया? We have just reinforced what India people wanted to believe India is. कि यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, बड़े मसाले हैं, नाच गाना है, और उसी को reinforce हम काफी वक्त तक करते रहे. Well, some of that is not wrong. The truth is, it's not deep diving into Indian ethos. When we say diversity, it looks like the way people are talking about diversity and inclusion in the world, India is also talking about diversity and inclusion in the world. But is it the truth? The truth is, when we say Vasudhaiva Kutumbakam, when we say Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti, or we go to Syadvad or Anekantvad, now ये सब चीजें हमारे ancient ethos हैं. Now people will say, why are you going to the ancient? अरे भाई वही तो आपको differentiate करता है. वरना everybody thinks like it's a fashion to talk about inclusivity and diversity. India is also talking about it. India is not talking about it. India has practiced it. Now how does it help brand India? It does help brand India because it makes it ahead of everyone, and it says that before you even it crossed your mind, this civilization was practicing it. I take a lot of pride in it. Whenever I go into different other countries, I make it a point, I say that. Another point which he made a point to say in G20 was mother of democracy. Now democracy, I think our Honorable Prime Minister had played a lot of emphasis to that, that people should know that democracy is not a newfound thought for India. It has been part of the ethos of this country. Another thing, sustainability. You look at sustainability, you say sustainable development. And मैं pride के साथ, बहुत गर्व के साथ ये कहता हूँ कि I come from a country जहाँ पर we never talk about human civilization, human thing. Keeping human at the center is not what we do. That we are humans and everything else is for our consumption. That is not the way India thinks. India thinks about Srishti. Srishti means all creation. There is a rhythm to the creation. So I am one of the part of the creation. Hence, it is not for my consumption. And what it does, that it creates sustainability on its own. And then sustainable development, sustainability comes like an afterthought. Like you say, sustainable development. The sustainability has come as an afterthought. But for India, development has to begin with sustainability because we believe in Srishti and creation and one with it. That's why we cannot harm something for our progress. Now, is it a modern thought or is it a thought which is part of the ethos of the country? And if somebody says it's part of the ethos of the country, you call them parochial, you call them the fact that they are, becoming inward looking. I think that is injustice and unfair. Well, Mr. Kant, obviously there has been a moment in time where we are deciding to make this pivot. But the experience has been thus far that Bharat was sort of tucked away a little bit, not for show, so to speak. You're now taking Bharat in, but we still sort of live with Make in India, Make in Bharat, Make in India, Made in India, etc. Ubharta Bharat, Made in India, how does that sound? नहीं, इन्होंने कहा कि भारत गूंज रहा है. मेरे विचार से भारत गूंज रहा है, पर भारत छलांग भी लगा रहा है, क्योंकि अगर आप हार्ड पावर देखें और सॉफ्ट पावर दोनों देखें ब्रांडिंग में, तो सॉफ्ट पावर में आप अपने एंशिएंट सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ पे जाते हैं, जो हमने वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात की G20 में, और सबको लगा, सारे देशों को लगा कि ये भारत को डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस डिफरेंट हों, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिफरेंट हों, पर एज ह्यूमन बीइंग्स हम सब एक कॉस्मोस से आते हैं. और दूसरी चीज़ जो सबको लगी कि सब में एक कंसेंसस बनना ज़रूरी है, तो ग्रोथ का इश्यू हो या ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हो या वेमेन लेड डेवलपमेंट पैक्ट हो, इसमें चाइना, सऊदी अरेबिया सब ने कंसेंसस अचीव की. और इंडिया ने ये दिखाया कि हम इमर्जिंग मार्केट्स, G7, रशिया, चाइना सबको एक साथ एक जगह ला सकते हैं. दूसरा, सबने भारत की लीडरशिप मानी कि हम प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में हम एक कंसेंसस हर इशू पर ला सकते हैं. वो केवल भारत ला सकता था.
तो ये भारत का एक बहुत बड़ा एक सॉफ्ट पावर की विजय रही और एक हार्ड पावर की विजय ये रही कि भारत ने माना, सबने माना कि भारत इस समय बहुत जोरों की तरक्की कर रहा है। देखिए, हम इस समय डिजिटाइजेशन पे नंबर 1 है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे नंबर 1 है, हम ग्रोथ पे नंबर 1 है। दुनिया की जितनी ग्रोथ हो रही है उसकी 20% ग्रोथ भारत से आ रही है। तो यही एक समय है कि आप अपनी पूरी ब्रांडिंग, ये समय है भारत का और ये समय फिर कभी नहीं आएगा। तो इस समय एक आपकी एस्पिरेशन है, आपकी एम्बिशन है, आपकी एनर्जी है, आपकी वाइब्रेंसी, आपकी डायनेमिज्म है, वो सब कैप्चर इनको करनी है इस समय। Well, as long as it's not just a topical change, as in you rebrand, but the reality must also change. So that's what you're trying to say. मैं ये कह रहा हूं कि इस समय एक, क्योंकि हमने बहुत अचीव किया है और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो आपने 9 वर्षों में किया वो भारत को 50 वर्ष लगते अचीव करने में। Right. तो एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है। अभी हमारा जो, हम हमेशा कॉलोनियलिज्म थिंकिंग में फंसे रहते थे, हम हमेशा वेस्ट को एप करते थे, हम वो अब हमारे दिमाग से निकल गया है। ये समझना बहुत जरूरी है। Thank you very much, gentlemen. It's been very इसका एक enlightening. ही वो है कि देखिए, ये हीन भावना जो है ना, जो आप कह रहे हैं, ये हम सबसे जानने की आवश्यकता है। इवन इफ यू वांट टू मेक ब्रांड इंडिया, यू वांट टू टॉक अबाउट द इंडिया डूइंग वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सेल्फ बिलीफ खत्म नहीं हो। क्योंकि आप ये देखते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में कमियां ही कमियां हैं। भाई, झील में पत्थर ही पत्थर हैं, झील भूल चुकी है झील होना। झील में पत्थर ही पत्थर हैं, झील भूल चुकी है झील होना। अब कहां बची गौरैया की फुरफुर, हर कोई चाहता है चील होना। तो आप भारत को अटैक करना चाहते हैं और अपनी कमियों को उजागर करना चाहते हैं। ये लोगों से मैं ये कह रहा हूं, जो लोग भारत की कमियों को अक्सर आगे रखते हैं, सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत ही जरूरी है कि हमें ये एहसास करा दिया गया कॉलोनियल पास्ट में कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कैसे हो रहा है? लोग एयरलाइन में आज ट्रैवल कर रहे हैं। अरे कैसे कैसे लोग एयरलाइन में आ रहे हैं? एक तो टैगलाइन ये रिजेंटमेंट कहां से भाई? कैसे कैसे लोग हैं? आपके ही तो लोग हैं। ये कैसे कैसे लोग एयरलाइन में आने लगे हैं? ये कैसे हम कह सकते हैं अपने लोगों के लिए? ये हम ये पहले रिजेंटमेंट भी जो प्रिविलेज क्लास में है, ये भी खत्म होना चाहिए कि भाई हमारे ही लोग हैं। जब तक ये तरक्की नहीं करेंगे, आप तरक्की कैसे करेंगे? Okay, well, very passionate about Bharat. Believe in Bharat. That's your tagline, perhaps. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much for being here. Thank you once again, Mr. Prasoon Joshi, Mr. Amitabh Kant. Thanks, Rahul. Thank you. Ladies and gentlemen, just one request. Kindly remain seated for all of the sessions. We do understand that there's a very strict security protocol. That's because the Home Minister and the Prime Minister will be gracing us with their presence. So we request each one of you to kindly remain seated as we continue with the day's events. Thank you so much. Well, we just heard Mr. Prasoon Joshi talking about Vasudhaiva Kutumbakam. That's so strongly rooted in India's civilization. It has been, in fact, a guiding light for the Indian family system as well. What does it mean? It's the world is one family, which has been also underlined by the Prime Minister Narendra Modi and showcases India's commitment towards the global community as well. India successfully recently hosted the G20 summit, as I said before, as well as the Shanghai Cooperation Organization, or the SCO summit last year. Now, from the quadrilateral security dialogue to Quad to BRICS, India holds a long list of such strategic membership. Well, the Prime Minister's Mother of Democracy description also echoes India's profound and ancient democratic foundation. Ladies and gentlemen, let's hear it from the man who has been shepherding all of this with such elan and grace. Please join me as I welcome Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, for a session that's titled India's Moment in Conversation with News18's Zaka Jacob. Welcome, Mr. Jaishankar. Nice to have you with us. Thank you, Zaka. Dr. Jaishankar, thank you very much for joining us here at Rising Bharat.
So we were having this discussion outside and internally in the run-up to Rising Bharat as well. In an election year, forget about election year, we are a few weeks away from elections. What do we ask the foreign minister? Is foreign policy top of mind of people during elections? You would think that more tangible things like homes and toilets, etc., are the things that people are more concerned about during election time. But funnily enough, Minister, in the News18 opinion poll that we had last week, one of the things that people said, one of the reasons why they will vote for Modi is because Modi ne desh ka naam roshan kiya hai. Modi has elevated the image of India substantially. Why do you think something that is not necessarily tangible, like foreign policy and foreign policy gains, has suddenly become a vote-determining issue? Well, first of all, let me say what a pleasure it is to be here with all of you. Look, to be honest, that answer doesn't surprise me. It doesn't surprise me because in the last 5 years, traveling around the country, I've seen this sentiment grow. And I attribute it to 2-3 factors. One, that there is a greater sense of pride in the nation about itself, you know. And also, as people's basic necessities are being met, they are also looking at many more things, you know. So they know today, for example, that the water connection will come, the electricity will come, the road will come, the health will happen, because they have seen that grow. So they're also, there's a kind of a, I would say, a new middle class thinking which is pervading through the society. The second is that you know, a lot of people today go out to work, go out on travel. They are tourists of various kinds. Something abroad in some way affects their livelihood. So the connection between being treated well abroad, being looked at well abroad, and their existence is also stronger. I would say the third factor would be, to me, the G20. The G20. You know, G20 actually ended up our initial concern, and Amitabh is here. Initial concern was how do we get it out of Delhi? But we actually ended up with the entire country owning the G20. That in very small towns, you know, I mean, people you would not think would have an interest in foreign policy, leave alone something as specific as G20. Actually, people had that sense, it's our G20, you know, it's a time to show our country to the world, people are coming. So I think G20 has had a great sense of connection. And finally, in a very peculiar way, COVID. That what COVID did was, at different times, it's made us aware, you know, after all, the COVID came from outside. You know, we sent vaccines outside. At a critical moment, we got oxygen from outside. So somewhere that connect with the world, it's made people more aware. Then it's technology. You know, you have the world in the palm of your phone. So I do want to ask you about the G20 part, because we have seen instances in the past where major sporting events have transformed the image of a nation, whether it is the Barcelona Olympics, the Beijing Olympics, and so on. But the G20, you know, the uncharitable way of putting it is it's a chalk shop. Why would that have permeated to the level of the Aam Aadmi and our Aam Aurat on the street in a way that it's lifted the image of India? Partly, as I said, physically, because it was done in 60 cities and towns. And mind you, other than those 60 places where something happened, people went out maybe to another 60 or 100 places more. So if you actually said in terms of locations, I would say maybe 120 to 150 locations in some way or the other saw G20. And we ran G20 actually like an Andolan, you know, like a Jan Bhagidari. So I mean, look, I've been doing G20 for 10 years now. This is the only G20 where you went to a place, you had a meeting, but there's a university running a event on a G20. There were a bunch of NGOs who were doing something on a G20.
the population was out there displaying their culture. So it had a, you know, a flair and a impact which was very, very different. So the second is, to be very honest, I don't think people expected us to succeed. Really? Yeah, you know, I mean, look, we went through, you know, saw the Indonesian presidency, the kind of pressures they were in. Every meeting was blocked by a single issue. And then finally, okay, we patched something together at the summit. All of us helped out because that's the way it is. Now, in our case, I think we took, frankly, much less defensive strategy. We said, look, every meeting, if there's a finance meeting, we will get a finance outcome. If you've got other issues, I'll put an asterisk and put it on the side, but you are not going to block that finance outcome. So what we did was, we piled up the stakes, outcome after outcome. So you said it's a talk shop. Yes, you are right, but you know, even talk shops make a difference. So when a talk shop, for example, ends up recommending to the World Bank that, you know, you need to change, reform as per a report which is coming out, or a talk shop says that digital public infrastructure is today a kosher concept and the rest of the world must adopt it for you know, propagation. Don't write off the power of ideas and talking. Ultimately, they move things. And I would say, you know, if you look at one thing which has gone very badly wrong with the world, which is that COVID, the impact of COVID has really set back development, SDG targets in the world. The G20 brought the focus back. So, and you know, people intuitively understand it, that people, you know, they may not know the nuances, but they knew the pressures were on us, and they knew that we had to, you know, get the outcome done at the summit, and I think they kind of get it. So, because this is election season, as they say, you have to go to the voters, give them your hisab of what you have achieved over the last 5 years. So in the realm of foreign policy, because you've been shepherding it, you've been marshalling for India's foreign policy over the last 5 years, aside of the G20, the COVID vaccines, navigating India's interests through these two wars, what is the one thing that you would say is the standout for the Modi government, which no other government in the realm of foreign policy has done in the last 75 years? Well, look, if, you know, it's not an if, it is a when. When I go out and explain foreign policy of the last 10 years to people, I would actually tell them Modi ki guarantee works as much abroad as it does in the country. Okay. And it is Modi ki guarantee which moved the whole Indian system in Operation Ganga, where 5 ministers were deputed and told you sort out those places and come back when the last people come back, when the military is put to work on a mission like this. It could be that, it could be Operation Kaveri in Sudan, it could be what we did during COVID. You know, the whole Vande Bharat mission, that anybody who was stuck somewhere, I mean, there were shipping crews, there were air crews, there were hotel people, there were tourists, there were students who had been you know, told your hostel is closed, go home. So what has happened today? And it isn't just the people who came back. You know, if you looked at the Gulf, where we have today almost 90 lakh people, you know, my deputy Muralidharan and I were regularly going to Gulf during the COVID because we were carrying messages from PM to the Gulf regime saying, you know, please take care of our people. And they did respond. They did take care of them. So, and it could be, it need not be just taking care in a physical sense. You know, the Modi ki guarantee also applies that I will take the right decision to make sure your petrol costs are kept within reasonable grounds by not bowing to political pressure. So that sense that, you know, we have a national interest, the national interest will and national welfare in a way, we will do what it takes.
We will send troops in the height of COVID to defend our northern borders. We will react to terrorism in a way in which will deter, any sort of repetition of such attacks. So it works in different ways. I think today, when part of the reason why people respond to foreign policy is they can see that visibly our international stock, our credibility, our weight, our influence has gone up. So just like the government puts its record to the people and says these are the things that we've achieved in the last 5 years, 10 years, the opposition also has a right to say that, look, this we think are the failures of the government when it comes to foreign policy. So they say, look at the whole situation vis-a-vis China. You mentioned that. The opposition's even gone to the extent of saying you've lost territory to China. Look at the neighborhood. Even friendly countries are not so friendly anymore. The situation with Pakistan is back in the back burner. With the West, there are serious differences on the Russia-Ukraine war, on the Israel-Hamas war. What would you say to that? What would you say to the opposition's narrative? Well, I would say, some of the places which, by the way, they said we had lost, were lost in 1962, if not before. So I'd say first go and get a lesson in history, possibly in geography. The second, we may have, differences with the West on Ukraine. But the purpose of foreign policy is not to agree with other powers on the basis of their interest. The purpose of foreign policy is to defend your interest and advance it. So if I have a difference, I have a difference. So what would the opposition like me to do? To get along with people and increase my petrol purchase, price at which I buy fuel? So, let's get the parameter of judgment right. I still say that if you look or take Pakistan, yes, today our relations are very, at a formal level, are very minimal. But why has it happened? It has happened for two reasons. One, because we have put terrorism fair square at the center of the relationship. And number two, the Pakistanis reacted to our long, in my view, a long awaited, something which should have been done much earlier, decision on 370. So what would the opposition want us to do? Not do 370 because it will upset Pakistan? Or talk to Pakistan ignoring that they do terrorism? Actually, that's what the opposition was doing. So if you ask me, look, foreign policy is not run as a global popularity exercise. It is run if you have an appeasement mentality at home, you will take it outside. So one of the points you mentioned, and again, this is the latest sort of criticism against your government, points of difference, if you will, with the West, is on the CAA, the Citizenship Amendment Act. The US State Department has reacted to it. I think the MEA has also put out a formal statement against it. When you speak to your Western counterparts, how do you tell them that this is not a discriminatory law, that people are not being discriminated basis their religion? Well, actually, it isn't when you speak. I have spoken. When CAA was passed, I did speak. Even now, I continue speaking. And there were 2 points I made. I actually, I had a meeting with all our European colleagues, EU colleagues. I'd gone to Brussels at that time. And I asked each one of them to look at the citizenship pathways which they have in their respective countries. And can you tell me that there is no criteria by which you will fast track a certain category? Every one of them has something. It could be religion, it could be historical, it could be language, it could be ethnicity. The fact is, and the US, I'm on record as giving multiple examples of that. So look, do understand, this is an issue of correcting a certain situation of our history. And it is a question of being just, of being fair to those people who were caught on the wrong side of history at the time when partition happened. And who at that time, whose welfare people worried about even then.
So, and as I said, this is not unique. I mean, if you go around the world, in different parts of the world, history has stranded people in different situations. Now, you can either be completely heartless and utterly calculating and say, well, it doesn't matter, who cares what happens. But if you look at the predicament of these people, these are stateless people who are stateless because of no fault of theirs, because political leaders of a certain era got it wrong. Somebody is righting a wrong. They're not wronging anybody. They are actually righting a situation where a wrong has been done to many people. You mentioned, not in a direct way, but in a tangential way about this in your book as well, Why Bharat Matters, as to why you believe, and you've made a case for it, it's for up to people to agree or disagree with it, that because of that mentality that you referred to in the first few decades after independence, there were missed foreign policy opportunities, particularly vis-a-vis Pakistan and vis-a-vis China. And vis-a-vis the US. And vis-a-vis the US as well. So, but some would say, now you have the benefit of hindsight to make that argument, to make that case. Perhaps in the 50s and 60s, that case would have been looked down upon or may not have been entertained. So, how do you then make the case that, these were missed goals or missed opportunities because there was a certain political bent of mind? I saw that argument coming, and therefore I anticipated it. So, a good batsman. So let me tell you. I mean, first of all, I just want you to think of this one very simple fact. You got Pakistan wrong, you got China wrong, you got US right, and we had a great foreign policy. So put that aside. I am not saying today, benefit of 2024, that, let's look back at 1954 or 1950. I'm saying somebody in 1948, 49, 50, 51, 52, as you were taking those decisions, stood up and said, please, Mr. Nehru, what you are doing, have you looked at this aspect of it? So this is not hindsight. These are Nehru's contemporaries who are questioning decisions which Nehru was taking at that point of time. So what are these decisions? I give you three. Shyama Prasad Mukherjee actually contests very strongly the Nehru-Liaquat Pact, saying, look, you are assuming that Pakistan is going to treat its minorities the same way as we are treating our minorities. But the very nature of creation of Pakistan and the regime which has come into being is very different. So how can you possibly make, such a fundamental misreading of these guys? And mind you, this is just 3 years after partition. Okay, well, a little bit more. The Patel, I'm giving you an example of China. Patel puts in writing that today, for the first time, we are facing a two-front situation. The intentions of China cannot be taken in a positive way. There is much that we have to apprehend. So please do not, have a sort of rosy picture of the situation. What is the answer from Nehru? I cannot conceive that anybody would undertake a wild adventure across the Himalayas. By the way, that's exactly what they did in 1962. So now, if Jaishankar in 2024 says, they got it wrong in 1954, your question is very, very valid. It's not Jaishankar who's saying it. It's Patel saying it on China. It is Shyama Prasad Mukherjee saying it on Pakistan. It is B.R. Ambedkar who says, look, why are you alienating the Americans? If you are to argue, you want to take on the American, I have no problem with it. I just told you foreign policy can be pushed back. At least fight your own cause. We were alienating the Americans on behalf of China. That we were taking up China's cause. And more than anything else, what an irony. That imagine, in 1950s, we spoilt our relationship with America because we were arguing on behalf of China. So this is not,
this is not hindsight, this is not a, a political polemic. I am placing before, especially the younger generations, because they wouldn't be familiar with it. I am placing historical situations, which is what I called a road not taken. That road was available, that road was marked. Those people drew a map and said, don't go this way, go that way. And we consciously chose not to take those roads. Now, I'm not saying there were no-brainers. I mean, there were pluses and minuses. But we need to get out of this, cult worship that everything from 1946 till pick your year, these were great years and we did splendidly. If anything went wrong, other people were to blame. But, Nehru's foreign policy is such a sort of impeccable theology that even today, whoever comes to power must follow it. And any deviation is somewhere wrong. I think, companies are audited. After all, countries should also be audited, for policies should be audited. People should look at what happened in the past with an open mind, with a critical mind. And by the way, I'm not saying it should only happen then. I'd be very happy if somebody said, I'd like to discuss the last 10 years with you. In fact, that's exactly what you're doing. And please defend your record. I'd be very happy to defend it. So let's talk about one big aspect of that record, and since you referred to in the previous answer about a two-front situation, are we not in a two-front situation today? We have, my friend, we have always been. I mean, it is we who were in denial. I mean, tell me, I'm now asking you as a person, Zaka, at which stage in your life did you actually feel that China was your strategic partner? I don't think in my lifetime. No, but yet in 2006, we actually have a declaration describing China as a strategic partner. So I want to say, look, there's a gut sense in society. Sometimes, and I say this as someone from the foreign policy fraternity, sometimes, this is a bubble you have created. Because in the earlier years, it was very much a Nehruvian ideological bubble. Nehru was against America, so everybody was against America. Nehru said China is a great friend, everybody says China is a great friend. So the vestiges of that continue, even today. I mean, you have a concept called Chindia. Okay, I don't, many of you will remember who put that concept forward. So if you actually have reached to think that you're making a sandhi of China and India, and you think we are that close, and our interests are so aligned, I mean, this is a different world. So I would put to you, if you go back, especially I would say to me, 1950s, it was latent. 1960s onwards, especially after the China-Pakistan agreement in 63, and the territorial transfer of Indian territory by one illegal occupier to another, you had effectively the two of them working in tandem. And to me, that is a very obvious basis on which to build policy. So let me now come to domestic politics. We've got the last 15, 16 minutes now. In the last 5 years, we have seen the transformation of Dr. Jaishankar from diplomat to foreign policy scholar. Now you're a full-blooded politician. So tell us, why is the Prime Minister spending so much time in southern India? Every day, every other day, he's in South India. In the last elections, in the last Lok Sabha elections, out of 129 seats in the 5 states in southern India, the BJP won just 29. A bulk of it came from Karnataka. Why do you in the BJP believe this time the south will be your new frontier and you'll be able to conquer the new frontier? Well, if I applied that logic, I could apply it to the rest of the country. There was a time, there were many states where there were no BJP MPs. So, in a way, every state, I mean, for a party like BJP, was a new frontier at some point. Why today, I mean, I don't know how many of you saw the
pictures of the Prime Minister's, road shows in Coimbatore and Palagat, etc. Look at the response that he's getting. So, my sense is, ultimately the results will tell. But as someone who's been traveling a fair amount, certainly to Kerala, Karnataka is a different case. There's already a strong history with BJP out there. My sense is, political opinion in those states is changing. That people today contrast, they've seen the benefits of good governance, that many of the changes of the last decade, as you say, the Anna Yojana, the food support, the Mudra scheme, the Awas Yojana for the housing, even what the vendors, informal economy is getting, Swanidhi, the Jal Jeevan Mission, the power connection, the road building. So when the Kisan Samman Nidhi so if you put all this together, they today realize, and particularly if you add to this health and insurance, they today realize that, look, because you are getting good governance out of the center, and these schemes have been pushed by the center, they have benefited literally tens of crores of people. They are looking, at a very, very different way, both at the center and at the BJP. The second, I would say, our sense of ourselves as a nation and society is also changing. There is today, you refer to it in a very different way, saying, why are people taking an interest in foreign policy? Yeah. I would argue one of the reasons they are taking an interest in foreign policy is they have a stronger sense of what this nation is about. And the South is, as deeply, if not more so, that sentiment as the rest of the country. And I think the combination of all these things is actually, it's certainly, anybody objective would tell you something is changing out there. You can see that, you can feel that. Now, we'll have to see how it goes, but I can tell you there's a fair degree of confidence about how this will work out electorally. You mentioned about the sense of identity, sense of pride. No doubt it's gone up in the last 5-10 years, but in the South, there's also regional identity. And one of the narratives, you can call it a trope if you want, particularly from the southern parties, is that your party is anti-South India, you're a North Indian party, you're a Hindu imposition party. As somebody who is a Delhi boy, but your family is from the southern part of this country, how would you counter that narrative? Well, look, I think by now, Prime Minister Modi has put that kind of propaganda to rest. He's contested it very, very effectively. But you have not had a Prime Minister of this country who has so visibly associated anything national with what you would call regional issues. It could be, the fact that we've taken foreign policy out there, the fact, even the parliament, the Singol issue, the fact he did Kashi Tamil Sangamam, or in fact also, a Tamil Saurashtra. So he's taken enormous pains to actually counter that kind of propaganda which has vitiated our politics for many, many decades. And my sense is today you're getting that traction. My next question is in two parts. First part, I know you'll dodge, but I'm still going to ask. But the second part is a little more weighty. The first part is, are you contesting the upcoming Lok Sabha election? Second part? The second part is, does it make a difference in your, practicing of foreign policy if you're an elected politician as opposed to one who is nominated to the Rajya Sabha? It's a hard one because if you look at the previous foreign ministers of India, you've had a mix. My immediate predecessor, Sushma ji, was from Lok Sabha.
and many of her predecessors. So it's a mixed issue. The fact is, today, certainly speaking from a BJP perspective, I can tell you how much focus there is on constituency, on ensuring delivery, on making sure that last mile, that leave no one behind message goes through. So when I look at my, I'm a parliamentarian of 5 years juniority. So I'm still a relatively new person, and therefore I'm very curious how does that peer group work. And I look at especially the effort which Lok Sabha MPs put in, and it's staggering. I mean, it's not, by the way, that the Rajya Sabha MPs have a ball. I mean, because certainly where the BJP is concerned, I mean, you have governance responsibilities, you have party responsibilities. I mean, you are on, really it's a 365-day kind of calendar. But there's always that balancing your focus and attention with what are foreign policy issues, with other responsibilities that you may have. It may be Lok Sabha, it may be something else as well. You've had ministers who were not Lok Sabha members, but who as foreign ministers had many other responsibilities to do. So you're not answering the first part? No. No. No, but since you said that the BJP gave so much attention to constituencies, is there a preferred constituency that you would like to fight from if the party asks you to? No, I think when I said I wasn't answering the first part, bowling a googly still doesn't mean the ball is going to be played. Okay, let's run you through the last 5 minutes of questions. It's a bit of a rapid fire, if you will. One foreign policy person that you have been inspired by in your career, both as a diplomat and now as a politician? Well, look, what happens if you pick somebody, I mean, I have some, if I look at the peer group of ministers, there would be there are people for whom you have genuine respect. The problem when you get into names is you name somebody and you don't name many others. But over a period of time, I would say, there have been people who, from their sort of respective perspectives, who were great authorities, who kind of dominated the scene. In many cases, it helped that they had longevity. In some cases, they may not have had that kind of time, but still, so it's safer in a way for me also to go back a little bit and pick. I mean, when I first entered the foreign ministry, I started my career in Moscow, and Andrei Gromyko was the foreign minister. When I switched to after Moscow, I was moved to the Americas division. Yes. And the first minister I met then was, at that time, Secretary of State was George Shultz. Now, I saw these people really from the eyes of, someone who's starting the business. But when you kind of read about them and, analyzed them with a passage of time, I mean, so even in our own setup, I would say, I mean, the foreign minister, when I joined the foreign ministry in India, was Atal Bihari Vajpayee. Oh, wow. It's 1977. So, 1977. So, when you look at some of them, different people appeal to you in different ways.
Atalji, for example, was always someone who was willing to sort of, in a way, break the mold. You know. And you saw that finally when it came to the nuclear test. So I would say at different points of time, I've had the good, you know, it's like if you are interested in cricket and you've been seeing a lot of test matches, you'd remember great innings. Yeah. You know. By the way, the first century I ever saw was Ian Chappell. Ian Chappell? Yes, in Delhi. Oh. So you remember, you know, you remember these moments, you would remember. I would hesitate to say, okay, this was the all-time greatest. I mean, yeah, that's a tough one, yeah. Yeah. Since you mentioned nuclear and since we're talking about all of these doyens, you've talked about him in the past as well and more recently as well about the legacy of your late father. He's the man who, you know, for all practical purposes was the architect of India's nuclear doctrine. Do you think about your legacy as to how people will remember Dr. S. Jaishankar? No, not really. I mean... how would you want them to remember you if it... I haven't even given thought to that. I mean, look, you know, you start, I guess people start thinking these things when they feel they are very advanced and are close to hanging up their boots. So you're far from that. Well, you know, I do not know what the future holds. I didn't know what it held 5 years ago. I would have, I mean, my wildest dreams wouldn't have anticipated becoming the External Affairs Minister. But I think I still have enough gas left in the tank not to think about parking in the garage and thinking about how people are looking. Please race away, Dr. S. Jaishankar. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar. Thank you so much. Thank you, Mr. Jaishankar. Thank you, Zaka. That was a fascinating discussion. I think his legacy will be remembered for taking India's foreign policy and diplomacy to great heights under his leadership. Ladies and gentlemen, I request everyone to be kindly seated, and once again I make that request to be seated for all the sessions and not to move out. This is because of the standard security drill. I'd request you to kindly adhere to the security protocol. There's still a lot of people who are standing there. Can I please request each and every one of you to kindly take your seat as we begin the next session? All right. Now, India has also made great strides over the last few years in the economic and foreign policy space, and it's also widely seen as a nation whose time has come. Well, this optimism finds resonance on the playing field as well. In fact, a rising India is riding high on the cricket pitch with both men's and women's team rampant. We are really testing consistent success in various sports, including boxing and badminton. But for a medal-hungry nation of 1.4 billion, there's still plenty to do to emulate the successes of some other nations as well. Ladies and gentlemen, I'd request you once again to be kindly seated before I introduce my next guest. Please put your hands together as I welcome with great pleasure Shri Anurag Thakur, Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, for our next session titled Gunning for Gold, No Hurdle Too High. This session will be in conversation with my colleague Anand Narasimhan. Welcome, Mr. Anurag Thakur. Let's have a huge round of applause for our next guest. नमस्ते, जय हिंद। अनुराग ठाकुर जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। अनुराग जी, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? 400 क्या पार होंगे हो। देश ने मन बना लिया 400 पार होकर ही रहेगा, और इसके लिए ख्याल भी अच्छे ही हैं, और समय का इंतजार है, बस वोटिंग शुरू हो जाए, चुनाव कैंपेन शुरू हो जाए। कुछ लोग सर इसे कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं।
मुझे लगता है जब आपने काम अच्छा किया हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा ही होता है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस ना की हो, काम ना किया हो, तो आपका संभव ही नहीं होता। और मुझे लगता है जिसके पास मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता हों, 10 वर्षों की उपलब्धियां हों और 2047 तक का विजन देश के सामने रख के विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, जो चुनाव से पहले भी पूरा दिन अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर अगले 25 वर्षों में भारत को कहां पहुंचाना है, संकल्प से सिद्धि तक कैसे लेके जाना है, इस सोच को रखता हो तो 400 पार होना जरूरी है। पर एक बात बताइए, इस 400 पार में आरोप ये है कि पहले वॉशिंग मशीन था, अब धोबी घाट हो गया है। बीजेपी और जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है कि जो भी आए उसको संभालो, अपने साथ करा लो, कल वो करप्ट था, आज नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। उनको जो सूट करता है वो वही बोलते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, किसी को कानून सजा देता है तो उसके खिलाफ जो दंड बनता है उसको देना चाहिए, लेकिन जब तक कुछ नहीं होता तब तक जान चल रही है। पर वो कुछ तब नहीं होता जैसे ही वो बीजेपी में आ जाते हैं, तब तक होता है जब तक बीजेपी में नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जहां पर समय के साथ साथ, अब कई वर्षों में देखिए नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी जी और सोनिया जी बेल पर हैं, लेकिन दूसरी ओर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। कोई शराब घोटाले में जेल में है, कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले पे बेल पे है। लालू यादव जी एक मामले में जेल में जाए, दूसरे मामले में जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी 9 सम्मन आने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होते, लेकिन राजनीति में आने से पहले बहुत ज्ञान कांग्रेस को बांटते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी से इतना प्यार क्यों है? कहीं ना कहीं हर दिन किसी ना किसी बहाने उन्हें समन दिया जा रहा है। नहीं, बहाने नहीं, कारनामे के कारण दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ की पराकाष्ठा, उनके झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा कोई और सबसे सफाई के साथ बोलने वाला है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। राजनीति में आने से पहले कहा बेटी की कसम खाता हूं नहीं आऊंगा, फिर कहा बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सबसे बड़ी गाड़ी भी ली, 2 राज्यों की सिक्योरिटी भी ली, सबसे बड़ा बंगला भी लिया, शीश महल के रूप में बनाया भी, करोड़ों रुपए खाए भी, और जो कहते थे ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा, सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है। पंजाब में सरकार बनाते स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल चला गया भ्रष्टाचार के चलते, और दिल्ली का शराब मंत्री जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये देते थे, आज कितने महीनों से जेल में बैठा है, बेल भी नहीं हो पा रही। पर वहां ये आरोप है कि क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को हराया 2 बार, इसीलिए बीजेपी थोड़ा गरम है, इसीलिए इनके पीछे पड़ी हुई है। चुनाव में हमारा क्या है जी, जनता ने जिता दिया जी, लेकिन बीजेपी हमारे पीछे पड़ी है जी। नहीं, ऐसा ये ईडी के समन तब तक आते रहेंगे जब तक हम बीजेपी का बुलावा स्वीकार नहीं करेंगे। आनंद जी, ऐसा है, चुनाव में हार जीत चलती है, बीजेपी को पहली बार थोड़ी हारी। हम तो उस राजनीतिक दल से हैं कि जब जनसंघ के समय से जमानत बच जाती थी, तब जमानत के बचे हुए पैसे से भी हम पार्टी देते थे कि अच्छा जमानत तो बच गई, लेकिन जो विचार हम उस समय लेके चले थे कि धारा 370 हटाएंगे, 35A से मुक्ति दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर में परमिट राज को खत्म करेंगे, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और CA का कानून लाएंगे। केवल एक दल भारत में ऐसा है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है, अपनी विचारधारा से हटके नहीं। हम अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं हुए, और इसीलिए जनता ने 2 सीट वाली पार्टी को 282 भी जिताई, 303 सीटें भी जिताई, और अब की बार 400 पार करके भी दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं ना जनता का, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड वेरी डिफरेंटली इन द वेस्टर्न मीडिया। हार्वर्ड हैज कम आउट एंड सेड कि द कमिंग इलेक्शंस आर नॉट अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ वरी। हार्वर्ड की एक लेटेस्ट स्टडी आई है। वीडेम कहता है कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गए। ये विदेशी मीडिया को आपसे इतना प्रेम क्यों है? मुझे लगता है गुलामी की मानसिकता से हम सबको बाहर निकल जाना चाहिए। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत नए मापदंड क्या तय कर रहा है। जब कोविड के समय दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए,
जो कहते थे यही विदेशी मीडिया कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे महामारी और भूखमरी के कारण, आज मैं इस मंच पर कह रहा हूं मोदी का नेतृत्व था, महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया, 2 वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पिछले 3 साल तो दिया ही, अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी है। उस समय जब दुनिया कहती थी कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में भारत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमने गैस भी खरीदा, तेल भी खरीदा। जब दुनिया ने दबाव बनाया तब कहा हमें भारत की ज़रूरत को पहले देखना है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी 140 करोड़ लोगों के लिए पहले देखनी है, और भारत ने जो निर्णय लिया हम उस पर खड़े रहे। ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है, और नए भारत की बुलंद तस्वीर इससे नजर आती है जब 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हुआ। लेकिन जब यही इंटरनेशनल मीडिया फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री के चेहरे के इंटरव्यू को लिखती है या छापती है या कुछ भारत के बारे में अच्छा कहती है, तो फिर आप ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि देखिए इसको दिखाइए इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या कह रही है। अब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को मत गिनिए जब वो आपको क्रिटिसाइज करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सन 2001 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। बहुत बड़ी चुनौती थी, उससे पहले भूकंप आया था, आपदा आई थी, गुजरात को वापस खड़ा करने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। देश के मीडिया ने न जाने क्या क्या उनके बारे में वर्षों तक लिखा होगा, और देश के विपक्ष ने तो यहाँ तक कि फर्जी मुकदमों से लेके ऐसे ऐसे बयान मोदी जी के बारे में दिए जो हिटिंग बिलो द बेल्ट, राइट, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन किसी ने कितने भी प्रयास किए हों, कितनी भी गाली निकाली हो, नरेंद्र मोदी जी का पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उनका काम ही ऐसा है कि वो गाली को भी अपने पक्ष में कैसे लाकर खड़ा कर दिया, ये मोदी जी ने दिखाया, क्योंकि उनका काम बोलता था। किसी ने कहा मौत का सौदागर, किसी ने कहा नीच, किसी ने कहा गंदी नाली का कीड़ा, किसी ने कहा चाय बेचने वाला है। लेकिन देश की जनता समझदार थी, जिन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री। हमने ईमानदारी के साथ आनंद जी 10 साल सरकार चलाई। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं है, ना मोदी जी पर है, न उनके किसी मंत्री के ऊपर है। और हम आगे के लिए भी जनता को विश्वास दिलाते हैं, ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, 5वें पर नहीं रुकेंगे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम भारत को बनाएंगे। लेकिन खेल नैरेटिव्स का भी है अनुराग जी। देखिए, यू आर दी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो इसलिए मैं वापस आपसे पूछूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय अकेडमियां आज भी भारत को जिस नज़र से देखती है, वहाँ ये कहती है कि मोदी सरकार के अंदर ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो रही है, यानी कि डेमोक्रेटिक तानाशाही। इस लेवल तक कहा जाता है कि जनता वोट जो भी दे रही है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस आपने कंट्रोल कर लिए हैं। ईडी आपके इशारे पर समन भेजता है, सीबीआई आपके इशारे पर अरेस्ट करती है, मीडिया तक को गोदी ही कह दिया जाता है। चलो मैं आपसे इसका उत्तर देता हूं। पहली बात तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बुला सकती हैं। दूसरी बात ये कहता हूं, आप में से किसी को ईडी का नोटिस आया? यहाँ पे सब साफ बैठे हैं, ईमानदार बैठे हैं। अब जिसने गलत काम किया होगा उसको ईडी का नोटिस आएगा। अब हमने वायदा क्या किया था 10 साल पहले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमने अपनी ओर से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। हमने कहा था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दिखाएंगे। अब आप तय कर लो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पर कार्रवाई तो तभी करनी चाहिए अगर वो पाला छोड़ के बीजेपी में आ जाए। आनंद जी, अगर ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, कोर्ट है कि नहीं है? हाँ। न्यायालय में जब वो जाते हैं क्या उनको बेल मिल गई? अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बेल मिल जाती तो ठीक है, अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलती तो गलत है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, उनको बेल मिल रही है, यहाँ आपको बेल नहीं मिल रही, तो पूछ रहे हैं कि वही वहां मिल रही है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? इतनी किसको नहीं मिल रही? आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को। भाई भ्रष्टाचार किया, सबूत है, वहां पे सारे आरोप हैं। अब ये तो मैं और आप किसी चैनल पे बैठ के तय नहीं कर सकते किसको बेल देनी, किसको नहीं देनी। ये न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे तो अपने देश के कानून पे विश्वास है।
न्यायालय पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। नहीं, ये जो प्रोसेसेस को कंट्रोल करने की बात है, हिमाचल कोई में जो process- हिमाचल में जो हलचल हुई, अब आप देख रहे हैं 15 महीने में वहाँ सरकार डगमगा रही है, वहाँ भी कहीं ना कहीं दोष बीजेपी को दिया जा रहा है कि भाई हमें नहीं चुना तो तुम्हारी सरकार भी नहीं चलने देंगे। घर आपसे न संभल पाए, आरोप पर हम पे लगाए। पिछले 9 महीनों से उनके विधायक एक के बाद दूसरा आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, जो वायदे किए वो पूरे होते नहीं हैं, उनके काम अपनी सरकार में होते नहीं थे, सरकार में अहंकार घमंड पूरा भरा हुआ था। और ये सरकार बनने के पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 97% हिंदू जहां रहते हैं हिंदुओं को हराकर ये सरकार बनाई है। ये घमंड और अहंकार था। फिर जो वायदे किए थे कि 1500 रुपये नारी शक्ति को देंगे, वो 1500 रुपया महीना नहीं दिया, 15 महीने बीत गए। वो 24 लाख महिलाएं प्रदेश की पूछती कि 1500 रुपया महीना कहाँ है। 5 लाख युवाओं को कहा था सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। वो पूछते हैं सरकारी नौकरी कहाँ है। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं दिया। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए देना था, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागवानों को उचित दाम देंगे, मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। यहाँ तक कि सेब और फल और उनको नदी और नालों में बहाने की नौबत आ गई। अब ये सरकार का दुखड़ा और रोना, ये दुख भरी दास्तान मैं आपको क्या सुनाऊं। ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख भरी दास्तान थी इनकी। पर आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई बातें पूरे नहीं किए, लेकिन जनता ने वोट तो कांग्रेस को दिया, बीजेपी को नहीं दिया था। 6 विधायक गए हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी सरकार वहां पर रिवोल्ट हो गई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जहां पर भी स्थिर नहीं है या आउट हो जा रही है, आज की तारीख में वो ऐसा कर रही है कि वहां की लोकल सरकारों को अस्थिर कर रही है। ये आरोप सही है कि गलत है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर सरकार में इतना दम होता, उनको लगता कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो क्यों नहीं वोट करवाया? क्यों आनंद फानंद में फाइनेंस बिल पास करवा दिया? क्यों हाउस एडजॉर्न कर दिया? क्यों नहीं वोटिंग तक लेकर गए? कांग्रेस को उस समय भी लगता था कि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है, अपना चेहरा बचाने के लिए किया है। और स्पीकर ने जिस तरह से उनको सस्पेंड किया, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा करता है। लेकिन अब जनता के बीच में जाएंगे, 6 की 6 सीटें वो भी जीतेंगे और लोकसभा की सीटें जीतकर भी, हमने पहले भी 4 की 4 जिताई थी, अब की बार फिर चारों की चारों हिमाचल से भी जिताएंगे और देश में 400 पार करके भी दिखाएंगे। हिमाचल की हलचल की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य जी की बात याद आई मुझे कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को किसी को भी न्योता नहीं मिला, सबको कहा गया आप बाद में जाइए। जिनको न्योता मिला, आधे से ज्यादा ने जाने से मना कर दिया राजनीतिक पार्टियों में से। विक्रमादित्य जी वहां गए, वैसे ही हलचल शुरू हो गई कि हिमाचल में कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्या कोई बीजेपी में ना होकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकता था? इस पे मुझे लगता है जितनी राजनीति, जितने हल्के स्तर तक लोगों ने की है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता नहीं दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां पर जो बहुसंख्यक होंगे उनको 500 वर्ष तक अपने ही देश में इंतजार करना पड़ा हो। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 150 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा हो। लेकिन हमने इंतजार भी किया, मुकदमे भी लड़े और जो कहा था वो करके भी दिखाया। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनाकर भी दिखाया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। हमने निमंत्रण सबको दिया। बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति के चक्कर में नहीं आना चाहते थे, बहुत लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ लोग आए। मैं स्वागत करता हूं अगर वो आए हैं। मुझे लगता है इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इसको आस्था के रूप पर से। राजनीतिक रूप से ही देखा जा रहा है। बीजेपी पर आरोप है कि पहले राम की राजनीति की, सरकार बनाया, बहुमत बना, पार्टी ग्रो हुई, अब मंदिर बन गया तो मंदिर की भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए मंदिर की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हमने हर बार अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 370 भी हटाएंगे, 35 से भी, ट्रिपल तलाक भी कहा, भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात भी हमने कही। जब हम नहीं बना पाते थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, कोर्ट का निर्णय नहीं आता था, तब तो आप जैसे बड़े पत्रकार हमसे भी पूछते थे, क्योंकि विपक्ष के लोग कहते थे
कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तब तो आप तारीख पूछते थे, अब हमने तारीख भी दे दी, निमंत्रण भी दे दिया, तब क्या हुआ? तब कहा गया कि बीजेपी से पॉलिटिसाइज कर रही है, इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। हमने केवल एक मंदिर नहीं, भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम भी, और भव्य और दिव्य महाकाल लोक भी, और अब भव्य और दिव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया है। ये आस्था के केंद्र है, ये आस्था के केंद्र है। लेकिन अब आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा बनाने के साथ यहाँ पे अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। तो मुझे लगता है अगर आप बुद्ध सर्किट देखोगे, बुद्ध सर्किट को देखोगे, करतारपुर कॉरिडोर को देखोगे, हेमकुंड साहब तक रोपवे को देखोगे, ये सब किसने किए? मोदी जी ने किए। आजादी के समय पंडित नेहरू जी ने निर्णय नहीं कर पाए, करतारपुर कॉरिडोर नहीं था उस समय करतारपुर। अब पंजाब में से दूरबीन लगा के हमारे सिख भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन वहां पे करते थे। ये मोदी सरकार को 70 साल के बाद निर्णय लेना पड़ा, तब जाके करतारपुर कॉरिडोर बना। हेमकुंड साहब का कभी जाके देखिए, हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, पूछिए कितनी कठिन यात्रा है वहां के लिए, लेकिन रोपवे से उसको आसान बना दिया गया। इसी तरह से बाकी जगह के लिए भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है, फर्क कहां पड़ता है आनंद जी? केवल आप देखिए, आज मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाया, लेकिन आप ये मुझसे क्यों नहीं पूछते कि अच्छा पहले एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने, पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? लेकिन मैं आपके सामने देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 710 मेडिकल कॉलेज हैं। केवल 500 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। केवल 16 IIT थे, आज 23 IIT थे। कल 12 IIM थे, आज 19 IIM हैं। हमारे यहाँ पर केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। पहले 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करने का काम किया है। आप पूछिए ना मुझसे विकास की बात, इनके समय 10 साल में 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था खड़ी रही, हम 5वें नंबर पे लाए हैं। इनका कालखंड पूरा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। अब हमने घोटालों की जांच की शुरू की, तो आप मुझसे जांच से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये फर्क है दो सरकारों का। इनके समय कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था, कोई बड़ा अलायंस नहीं होता था। टुडे आई कैन से मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, योग और आयुर्वेद को जो दुनिया के स्तर पे लेकर गए, वैश्विक पहचान दिलाई, वो कौन आज से पहले कर पाया था? कोई नहीं। हमने G20 की अध्यक्षता की, हो सकता था दिल्ली में ही करते, देश के 60 शहरों के 200 स्थानों में की। भारत की कला, संस्कृति, अपनी परंपराओं को दिखाने का काम दुनिया को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वो खड़े हो सकते थे, बैकड्रॉप पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे हजारों वर्ष के इतिहास को दिखाने का काम किया, व्हील्स ऑन टेम्पल का दिखाकर जी हमारे हजारों साल की संस्कृति को दिखाने का काम किया। जिस टेबल पे हम बैठे थे, जिस पे मैं बैठा था, वो तो बालाघाट लिखा था। अब आधों को पता नहीं होगा बालाघाट है कहाँ पे, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जहाँ पे नक्सलवादी इलाका है, उसको भी वहाँ पे रखा, लेकिन उसकी और क्या विशेषताएं। ये नरेंद्र मोदी जी जिस तक जहाँ तक सोचते हैं, जो आपका मीडिया का सेंटर बना था, कोई हिमालयन रेंज को दिखाया था, अलग अलग पर्वत थे, अलग अलग नदियों के नाम पे रखा था। कौन सोचता था ऐसे? कोई नहीं। ये व्यक्ति बिल्कुल अलग सोचते हैं। नेतृत्व ऐसा है जो देश की कला, संस्कृति, परंपराएं, इनको भी तो बचाते ही हैं, लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग होकर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकती है, ये पारदर्शिता हमारी सरकार में जवाबदेही देखी गई। जब हमने जनधन आधार मोबाइल को लाए, डीबीटी करके दिखाया, तो आज 43 करोड़ बैंक खाते भी खोले तो उसमें सीधा पैसा भी भेजते हैं। अगर 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले, 27 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के गरीब व्यक्ति को मिला, तो वहीं पे 80 लाख
स्वनिधि योजना का ऋण हमारे रेडी फड़ी वालों को मिला, जो लाखों करोड़ रुपया क्यों मिला? इसलिए मिला कि अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा कर सके। आज वो अर्थव्यवस्था को एक अपना योगदान दे पाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहने के लिए आपके लिए एक योजना होगी, लेकिन वोकल फॉर लोकल पर जब मोदी जी ने पिछले हमारे फेस्टिवल सीजन में कहा कि लोकल को खरीदिए, 4 लाख करोड़ रुपए की सेल हुई। ये आप कल्पना भी नहीं पहले कर सकते थे। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है तो लोग उस दिशा में काम करते हैं। ये बदलाव है आज देश में। लेकिन अगर आप ये सब कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक शक्ति है, इसको नष्ट करना है। ये शक्ति कौन है? अब शक्ति की बात आई है तो हम तो हर नारी में शक्ति देखते हैं, हर महिला में, हर बेटी में, हर बहन में शक्ति देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन की भक्ति ही शक्ति में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं। लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच जैसी भी हो, सनातन को कुचलने की हो, हिंदू को खत्म करने की हो, शक्ति के साथ भिड़ने की हो, ना सनातन को कुचल पाया है, ना कोई सनातन को कुचल पाएगा, ना शक्ति को कोई दबा पाया है, ना शक्ति को कोई दबा पाएगा। पर अगर इसे ऐसा देखा जाए कि एक शक्ति है जो सनातन का प्रयोग कर कर और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, शक्तिमान होने की कोशिश कर रही है, ये वो शक्ति है जो मनुवाद की प्रचारक है। ये वो शक्ति है जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये आरोप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब इसमें तो शक्ति के रूप में मैंने पहले भी कहा, सनातनी के लिए तो शक्ति में ही भक्ति हमारी जो है वो शक्ति के रूप में ही करते। अब कुछ लोग हैं जो इस सोच के साथ चले, अब उनके बारे में मैं कितनी टिप्पणी करूंगा। पहले उनके कुछ गुर्गे थे जी। गुर्गे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले अलायंस पार्टनर्स के थ्रू एक राज्य से शुरू हुआ जी। वो कहते थे हम सनातन को कुचल देंगे। हाँ। कोई कहते थे राम मंदिर के, हाँ। राम मंदिर के पूरे भव्य निर्माण के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम गए तो एक राज्य ऐसा भी है जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों में उसके लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। क्या आज हमें भारत में अपने मंदिर में आस्था के केंद्रों पर इस तरह से कोई राज्य की सरकार करे तो क्या उचित है? और उनके ही नेता मुख्यमंत्री के पुत्र कहते सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, गंदी गंदी बीमारियों के साथ उसको जोड़ के देखते हैं। ये क्या सोच है? और राहुल गांधी जी चुप बैठते हैं। फिर उनके दूसरे मंत्री जो घोटाले में 2G में उनका नाम आया था वो बोलते हैं। इसके बाद इनके मुख्यमंत्री पहले हिमाचल प्रदेश के बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं को हरा कर आए हैं। फिर संदेश खली में शक्ति को कुचलने का, अपमानित करने का काम एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले होता है और संरक्षण उस नेता को देती है जो उसके पार्टी से सीधा जुड़ा है। संदेश खली का संदेश आज देश की गली गली तक गया है, लेकिन संदेश ये गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाई। उसके रहते उनकी अस्मिता लुटी, उनके घर बार लुटे, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। अगर देश का मीडिया नहीं जागा होता, हमने आंदोलन नहीं किए होते, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर ना निकली होती, तो ममता जी की नाक के तले संदेश खाली में खेल होता। अनुराग जी, आरोप यह है कि संदेश खाली तो एक छोटा एक टापू है और जहां पर यह प्रताड़ना कई सालों से चल रही है। उसके बगल में सोना खाली था। बीजेपी ने विषय तब उठाया जब चुनाव सर पर आए थे। आपने मंदिरों की बात की, सनातन धर्म की बात की। कर्नाटक में यही HRNC एक्ट चल रहा है जिसमें बीजेपी के शासन में भी चल रहा था। 4 धाम जब प्रोजेक्ट आया था, वो इलेक्शन से पहले उसको सरकार ने कहा कि हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, हम वापस उसको दे रहे हैं। तो ये जो मंदिरों का कंट्रोल है, जब बीजेपी की सरकार है तो सही है, लेकिन दूसरी सरकारें हैं तो गलत है। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट थोड़ा वॉक द टॉक। आपने तो वही कह दिया जो खड़गे जी कह के गए थे किसी मंच पे। उन्होंने कहा हाँ ये तो वर्षों से चलता था। तो क्या करें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने दें?
नहीं, अगर आप इससे सहमत हैं नहीं, नहीं, तो फिर तो बड़ी चिंता का विषय है। आरोप आप पर मौका अगर आप परस्ती का है। खड़गे जी के साथ अरे सहमत नहीं, हैं कि शक्ति के खिलाफ देखिए, ऐसा होता है महिलाओं के खिलाफ, मेरा तो एक ही है मत सर, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं यहाँ जो तिरंगा है इसी के साथ हूँ, इस भारत के साथ हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि वहां जो हो रहा था वो तो आपने इसी चुनाव से तो 60 दिन पहले उसे उठाया। जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तब कर्नाटक के मंदिरों पर से फिर से वही वसूली, वही टैक्स होती थी, जिसको कि आज बीजेपी विपक्ष में रहकर जजिया कह रही है। मैं आपको बहुत क्लियर करके कह रहा हूं। पहले तो संदेश खली पे आता हूं जहां पे आपने महिला शक्ति की बात की। देखिए अंतर क्या है, एक तरफ वो सरकार है जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता आंखें मूंद करके बैठी, दूसरी ओर हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो नारी शक्ति बंधन बिल लाके 33% आरक्षण विधानसभा से लेके लोकसभा तक सुनिश्चित करती है। बाकी लोग लॉलीपॉप दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन 33% हमने लटकाया, टिकटें बीजेपी ने अभी तक नहीं दी है। हमने लटकाया चुनाव में क्या क्या 33% महिलाओं को टिकटें बीजेपी ने लोकसभा के लिए अभी तक पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कहां है? लटकाना, भटकाना, अटकाना ये कांग्रेस का काम था। हमारा पहला राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में आरक्षण दिया है महिलाओं को, ऑफिस बेरर में भी और पूरी बॉडी में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उसका सदस्य रहती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी उसका सदस्य रहती है। इसके साथ साथ अगर मोदी सरकार में अगर आप मंत्रिमंडल में देखेंगे, जहां ओबीसी की रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है वहीं महिलाओं की भी रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं वापस आता हूं कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे बड़ी बात है, महिला की दिनचर्या में पहला क्या काम? शौचालय नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, पानी नहीं था, दवाई नहीं थी, अनाज की कमी थी। अब 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए हैं, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया है, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 5 लाख की दवाई मुफ्त में दिलाई और अनाज की कमी को भी पूरा किया, जब अनाज मुफ्त में देने की गारंटी पहले भी दी और अगले 5 साल की गारंटी भी दे दी। अब उस महिला के जीवन में शौचालय जाने से लेके पानी भरने को भी छोड़ के, अब अपने घर पे पानी आता है, गैस सिलेंडर वहीं पे ही है, पक्का मकान भी वहां पे दे दिया है। ये पहले नहीं आना था आनंद जी। महिला को स्वाभिमान के साथ जीना, उसको मान सम्मान देना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आम महिला को, करोड़ों महिलाओं को, तो वहीं पर उनको राजनीति में भी देना आरक्षण, वो भी किया। रिपब्लिक डे परेड को आप में से कितने लोगों ने पिछली बार देखा होगा? आप लास्ट 2 रिपब्लिक डे परेड देखिए। पिछले साल की जब थी तब इजिप्ट के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने, प्रेसिडेंट सीसी ने कहा प्रधानमंत्री को कि आपके कर्तव्य पथ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तो वुमेन डेवलपमेंट की बात करती है, यहां वुमेन लेड डेवलपमेंट है, महिला नेतृत्व विकास है। और इस बार तो पूरे कर्तव्य पथ पे अगर किसी ने लीड किया है और समर्पित किसी को रिपब्लिक डे परेड थी तो नारी शक्ति को थी। ये मोदी सरकार में ही संभव हो सकता है। अनुराग जी, आज दुनिया में अगर 1000 एयरक्राफ्ट का हमने ऑर्डर दिया है तो केवल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को मत देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा वुमेन पायलट्स किसी देश में तो भारत में है। ये भारत में ही संभव है। मैं ये भी कह रहा हूं कि रिपब्लिक डे पर जो किया गया सराहनीय है, लेकिन इसे ऑप्टिक्स कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप ऑपर्चून मोमेंट पे इसको करके इसको पैकेजिंग फैंटास्टिक कर रहे हैं, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। यही आरोप है। आरोप यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है बट कई सारा जो है ड्रेस्ड अप है मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए आंकड़ों को ना आप झुठला सकते ना मैं। अब कांग्रेस वो है जो 60 साल तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में, यानी कि अति गरीबी रेखा वालों में से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अभूतपूर्व कार्य किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अगर आप उसको भी झुठलाएंगे, अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहती है, नीति आयोग भी कहता है, बाकी एजेंसीज भी कहती है, तो मैं आपको और कैसे विश्वास दिलाऊं? नहीं, पर अगर 4 करोड़ पक्के मकान हम बनाकर देते हैं जी तो ये तो कोई झूठ नहीं है। 3 करोड़ बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई, ये शौचालय आपके साथ बने, डीबीटी करके 31,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में मदद के रूप में डाला गया, कोविड के समय डाला गया। अब ये आंकड़े नहीं, ये तो एंट्रीज हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं
आपकी बात अब जनता मानती है कि नहीं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। अब सीए के नोटिफिकेशन को देखिए, जो एक्ट था सीए अमेंडमेंट एक्ट 2019, अमित शाह जी आने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन और इस एक्ट को लाने का काम भी आपकी सरकार ने किया, श्रेय आपको जाता है। 2020 में एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, श्रेय आपको जाता है। लेकिन इसकी रूल्स की नोटिफिकेशन 5 साल बाद, करीब 4.5 साल बाद अभी आई है, तो वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो फिर ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि भाई आप सब कुछ चुनाव के आसपास ही टाइम कर रहे हैं इसको। आनंद जी, 2019 के चुनाव जीतने के बाद पहला पार्लियामेंट का सेशन आया जुलाई अगस्त का, हमने अनुच्छेद 370 35 से आर्टिकल 370 35A इसको हटा दिया, ट्रिपल तलाक पे कानून ले आए, सीए पे ले आए। तो आप लोग तब सवाल पूछते थे मोदी सरकार को जल्दी क्या है, 5 साल पड़े हैं, 6 महीने में क्यों पूरा कर रहे हो? तब आपका ये सवाल था। फिर आप पिछले 5 साल पूछते थे सीए लाए क्यों नहीं, अब ले आए और नियम भी ले आए, तो अब आप पूछते हो नियम क्यों ले आए? भाई, जो लोग 50-50 साल से अपनी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया गया होगा, जिनको धर्म बदलने पर मजबूर किया गया होगा, जिनकी 14 साल की बेटी को उठा के निकाह पढ़ने के लिए मजबूर किया होगा, उसको जब न्याय कोई नहीं दिला पाया तो नरेंद्र मोदी ने यहां पर न्याय दिलाने का काम किया है। अरे हमने तो अपने 5 साल में किया है। कांग्रेस ने जो 50 साल पहले सिंचाई योजना शुरू की थी, पुल बनाना शुरू किया था, वो भी पूरा नहीं किया, वो भी मोदी सरकार ने पूरा किया है। पुल से लेके सड़कों से लेके बाकी काम हमने पूरे किए। ये तो कानून के नियम थे, अब लागू भी हम ही कर रहे हैं। नागरिकता उनको मिल रही है जिनको अपना देश छोड़ के, गारंटी किसने दी थी? नेहरू जी ने, कि उनको उसी देश में रह के संरक्षण मिलेगा। अल्पसंख्यक हैं, 23% हिंदू थे, आज 2% रह गए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। क्यों? अफगानिस्तान में तालिबान आया, पूछिए क्या हुआ? गुरुद्वारा साहब पर, गुरु ग्रंथ साहब पर क्या क्या नहीं। मोदी सरकार ने 3 बार प्राइवेट चार्टर जहाजों को भेज के, प्राइवेट जहाज भेज के, प्राइवेट मींस की सरकारी जहाज भेज के 3 बार गुरु ग्रंथ साहब को भी लाए, सैकड़ों सिख परिवारों को भी लाए, एक की भी जान नहीं जाने दी। ये जो आप तिरंगा दिल पर यहाँ पे लगा के बैठे ना साहब, हम सबके दिलो दिमाग पे तिरंगा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय जब मैं तिरंगा यात्रा कलकत्ता से कश्मीर तक लेकर गया, इसी आर्टिकल 370 35A के खिलाफ, मुझे लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया, जेल में डाल दिया गया। आज मेरे से ज्यादा खुश नसीब कौन होगा जब लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा झंडा लहराता है, तिरंगे की रोशनी में लहराता है। हमारी पार्टी की 3 पीढ़ियों ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, फिर मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी 1992 में गए, 2011 में मैं गया। 3 पीढ़ियां किसकी पार्टी ने किया होगा? ये केवल हमारी पार्टी है जो उस मुद्दे को लेकर तब तक चली जब तक 370 धारा को खत्म नहीं कर दिया गया। तिरंगे की बात मैं यहां तक करना चाहता हूं, विदेश में बैठे लोग आज इसलिए गर्व के साथ तिरंगा उठाते हैं, इंडियन पासपोर्ट को आप लोग बाहर जाके दिखाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन गंगा की सफलता, 27,000 भारत के विद्यार्थी और नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन की युद्ध भूमि से कोई निकाल कर लाया, तो नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। अफगानिस्तान से, नेपाल से, सीरिया से, लीबिया से, ये तब संभव हो पाया अलग अलग ऑपरेशंस के माध्यम से। और कोविड के टाइम पे तो लाखों भारतीयों को स्वदेश सुरक्षित वापस लाए, ये संभव नहीं था जी। आज हर भारतीय की जान, उसका महत्व है, ये पहले नहीं होता था। ये मोदी है तो मुमकिन है, और आज तिरंगे का ही समय है जी, यही समय है, सही समय है। मोदी सरकार का तीसरी बार आने का भी यही समय है। यही समय है, सही समय, मोदी सरकार का यही समय है, आप कह रहे हैं। चलिए जल्दी से कुछ मैं स्पोर्ट्स पे भी आपसे पूछना चाहता था। भारत ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है। देखिए, पहला तो मेरा गिला आपसे है कि स्पोर्ट्स को जो प्राथमिकता समाज ने अब पहले से ज़्यादा दी, लेकिन आपके सेशन में सबसे एंड में फिर लाए। हम सबको स्पोर्ट्स को सबसे आगे रख के चलना है। इट्स अ सॉफ्ट पावर जी। और देखिए, हमने टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने सबसे ज़्यादा मेडल आज तक के जीते। और जब हम एशियन गेम्स में गए तो पिछली बार 64 मेडल थे, लेकिन इस बार क्रिकेट में तो सेंचुरी हम लगाते ही हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल जीतने का काम भारत ने किया, जो आज तक के सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपका सवाल मुझे पता है किस दिशा की ओर है। जी हाँ, मोदी जी ने बहुत क्लियर कर दिया है। और जब आईओसी का सेशन था तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारत
ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। 2030 में यूथ ओलंपिक्स, 2036 में समर ओलंपिक्स, जैसे ही बिड शुरू होगी भारत होस्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे तो हमारे में दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भी यहाँ पर है। हमसे बड़ी मार्केट जी आने वाले समय में कोई नहीं होगी खेलों के विस्तार के लिए। तो जी हाँ, 2030 का यूथ ओलंपिक्स, 2036 का समर ओलंपिक्स भारत आयोजन करने के लिए तैयार है। चलिए लास्ट के 1.25 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ये रैपिड फायर की तरह आप इसे ले लीजिए। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। टेरिटोरियल आर्मी आपने छोड़ दिया, पर क्रिकेटर होते। ठीक है। घर में टेरिटोरियल आर्मी में तो अभी भी हूँ। अभी भी आई एम अ सर्विंग कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। करेक्ट। तो फौजी भी है, नेता भी है, कॉम्बिनेशन, और क्रिकेटर भी है। धर्मशाला में मीडिया का मैच कब कराना है सर? वादा कर रहे हैं, कराया नहीं, मुझसे कहा, पूछिए। मेरा बस चले तो मैं तो चुनाव प्रचार के दौरान ही करवा दूं, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम भी आई तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान कहीं पर है तो धर्मशाला में। आनंद जी, इसको मैं 1 मिनट और लेके, इसलिए आधा मिनट में बोल देता हूं। पहली बार हुआ होगा कि यूके से लगभग 4000 लोग फ्लाई करके केवल धर्मशाला का मैच देखने आए। ये अपने आप में लोकल इकोनॉमी और खेल के लिए बहुत बड़ी बात। एक भूल जो आप सुधारना चाहेंगे? पहले भूल करना ही नहीं चाहूंगा तो सुधारने की तो दूर की बात। हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान? हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान, यानी कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स या नेशनल लेवल पॉलिटिक्स? दिल में है हिंदुस्तान, लेकिन जमीन है हिमाचल में, तो जमीन बचा के रखनी और देश के लिए काम करना हिंदुस्तान के। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनुराग ठाकुर। Big round of applause for him, please. Thank you. In 2019, the world's largest democracy went to polls. As millions cast their votes, there emerged one undisputed winner: News18 Network. On election result day, our news network had the highest cumulative reach. भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के तौर पर हमें एक निर्णायक बढ़त मिली, क्योंकि 2019 में हमारे पास थी रिपोर्टर्स की सबसे विशाल टीम, जो देश के चप्पे चप्पे की हर हलचल ला रही थी, जिससे हमने देश को यह भरोसा दिलाया कि सिर्फ हम आप तक लाएंगे सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। So what's new in 2024? As we head towards the general elections, we're only getting bigger and better. आंकड़ों के इस गणित को सुलझाकर न्यूज 18 ने मार्केट में शिखर पर अपना कब्जा और मजबूत कर लिया। Our digital brands are among the country's most admired and followed. We've built a formidable following on social platforms that allow our messaging to spread wider. Our websites are now 320 million unique visitors and 5 billion page views. Our studios have been built with the latest technology and storytelling tools that will keep our audience engaged, informed, and entertained. न्यूज 18 नेटवर्क पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव की महा कवरेज के लिए, आप तक सबसे तेज, सबसे निष्पक्ष, सबसे भरोसेमंद खबर पहुंचाने के लिए। And not just the politics. After all, What's new politics and the about economy. news? Nothing. That's until we stepped onto the scene. Instead of playing the game, we became the game. We reach 700 million people every year via TV and a whopping 320 million per month through digital properties. How did we do this? We went global. Forging partnerships with the biggest names in the media industry like CNN, CNBC and Forbes. Partnerships that are dominating their category. Our flagship English news channel CNN News 18 blew past the limits of what's possible, reigning as the #1 news channel for over 52 weeks. Our national brand, News 18 India, has more viewers than even popular entertainment channels and is India's #1 Hindi news channel. When it comes to numbers and trends, we mean business.
so that you stay on top of your business. That's why CNBC TV 18 doesn't just lead in the business news category, it is the category. Commanding 96% of the market share. And our Hindi business channel, CNBC Awaaz, has been the trusted partner for traders for 19 years running, delivering swift market analysis that has made it the preferred choice for influential voices in the country. Our channel, CNBC Bazaar, dominates the Gujarati business news landscape. We've expanded into the beating heart of Bharat, speaking many languages and the truth, even as several of our regional channels rule the charts. While we dominate the airwaves, we've kept our fingers on the digital pulse. Our digital brands are platforms, not just websites. We curated informed opinions on First Post, creating premium properties that are expanding our global reach and presenting India's voice to the world. And with Money Control, we're blurring the lines between media and tech, straddling everything from news, data, analytics to transactions, creating products that help Indians multiply their wealth. Money Control's engagement metrics and app downloads are greater than all competition put together, making it the biggest news subscription product in India. But we're not just focused on numbers. We want to change lives, one campaign at a time, going big on purpose, creating initiatives that matter. We are changing India through Local 18. We've extended our reach to small towns, villages, gullies, and mohallas, telling stories from the grassroots, creating access to untapped markets. We are Network 18, where news breaks on all platforms, made possible by converged digital-first newsrooms. We put the new in news. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। नए इंडिया का For the biggest elections of the year, Where did the BJP trust only the best election team. No compromise. That brings domain expertise and diversity. ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली. Do you see that? Demystifying news. आप क्यों परेशान हो रहे The हैं? hard facts. Will you stand up for Hindus? Global perspective. China is trying to twist the The narrative. tough questions. क्या बीजेपी इसको भारत में लोकतंत्र India first. The country, its people. Voice of the people. ये नेता भी बड़े गजब के होते हैं. Count on News 18 Live Result Hub to get you the fastest and most accurate election results. Elections equals News 18. CNBC TV 18, an unending pursuit for excellence. A pioneer, a leader, a visionary, building a lasting legacy of credibility, consistency, and trust. Giving unparalleled access to global thought leaders and powering conversations that are shaping the new world order. Setting the highest standards through exemplary leadership. It is this unrivaled reputation for the most comprehensive coverage, actionable intelligence, and in-depth reporting that makes CNBC TV 18 India's #1 business news brand. Foreseeing change, growth, and transformation for over a quarter of a century. Trendsetters crafting innovative content formats. And award-winning business journalism. On air, online, on social media.
As we embark upon 25 years of excellence, we invite you to be a part of our future. CNBC TV 18, your trusted partner and investment ally. हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस और इजी EMI की सुविधाएं। तो अब डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना। कृष्णा का राधे राधे। अरे तुम फिर आ गए। इसको तो बाइज्जत बरी किया था ना। सर, इस बार इसके घर वालों ने इस पे केस किया। अब क्या किया इसने? ये पहले टीवी तोड़ रहा था, अब टीवी छोड़ ही नहीं रहा। कैसे छोड़ू सर, कैसे? जब अपन नई कहानियां, जबरदस्त मोटिवेशन और मजा घर में बैठ के पाएंगे तो टीवी छोड़ के अपन किधर जाएंगे? क्या बोलती पब्लिक? ऑल्टो K10 OMG ये मेरा इंडिया का 10वां सीजन को पावर्ड बाय policybazaar.com एंड पैसाबाजार.com हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री TV 18 पर।
Ladies and gentlemen, I'm going to request everybody to please settle down, and a humble request to kindly turn your mobile phones off or put them on silent mode. अगले सेशन की शुरुआत अगले 2 मिनट में हम करेंगे। भारत के गृह मंत्री और कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह यहाँ राइजिंग भारत के पटल पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ यहाँ पर होंगे एक वार्ता चर्चा के लिए। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनसे पूछने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि भारत कहाँ जाएगा आगे जाकर। 2047 का ये जो लक्ष्य है विकसित भारत का, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस तक कैसे पहुंच सकते हैं। थीम ऑफ राइजिंग भारत, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैज बीन टू लीड फॉर ग्लोबल गुड एंड हाउ वी कैन सेट द टोन फॉर अ फ्यूचर जहां हम ये कह तो सकते हैं, आई एम गोइंग टू कोट प्रसून जोशी जी, कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पर इससे आगे जाकर हमें ये कहना है कि मैं रहूं या ना रहूं, संसार ये रहना चाहिए, संस्कृति ये रहनी चाहिए, सभ्यता ये रहनी चाहिए, और हमारी पृथ्वी इस लेवल पर, इस तर्ज पर रहनी चाहिए कि आगे की पुश्तें भी, पीढ़ियां भी यहाँ रह सकें। दोस्तों, भारतीय राजनीति की बिसात पर आज की तारीख में अगर किसी की साख है तो वो है श्री अमित शाह। उन्हें यूं ही चाणक्य की उपाधि नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीय और बेहद करीबी तो ये हैं ही दोस्तों। विश्व में, लोकतंत्र में इनके जैसे नेता बहुत कम हैं। नजरिया या दृष्टिकोण 3 फीट से हो या 30,000 फीट से, इनका फोकस हर लेवल पर क्लियर है। इनकी कर्मठता और पीएम मोदी जी के साथ इनकी अभेद पार्टनरशिप, इसकी वजह से भारत में पिछले कई वर्षों में इतिहास रचा गया है। 370 हटा, एक देश एक विधान हुआ, इंस्टेंट 3 तलाक बाधित हुआ, समाज से कुरीति हटी, सीएए नोटिफाई हुआ, विभाजन के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पलायन कर भागे कई दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को पहचान मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए उस लौह पुरुष की जैसी एक भारत के प्रति अड़ी निष्ठा रखते हुए आज हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। स्वागत करना चाहेंगे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिनसे वार्ता करेंगे श्री राहुल जोशी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ, नेटवर्क 18। अमित जी, आपका हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है कि कल सुबह 4 बजे तक मीटिंग चल रही थी, कल आप हमारे साथ नहीं जुड़ सके, आज आप आए हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं और आपके ही पास सारे जवाब भी हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार का जो माहौल है, 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, लोग सीट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे, कितने से जीतेंगे। 2019 में भी बालाकोट हुआ, उसके बाद माहौल बदला और एक लोगों ने फिर प्रेडिक्ट करना एक मिनट, बालाकोट के पहले से ही माहौल भाजपा के पक्ष में था और हम जीतने वाले। पर इस बार अमित जी, इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के, आज़ादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है
एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हाँ मैं भारतीय हूं, गर्व के साथ कहता है हाँ मैं भारतीय हूं, और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय पासपोर्ट के साथ जो कोई भी जाता है, इसका बड़ा सम्मान होता है। ये 10 साल में विकास की प्रक्रिया से पूर्णतया कटे हुए 60 करोड़ गरीब, जिनको 70 साल की आजादी के बाद भी बैंक अकाउंट नसीब नहीं हुआ था, घर में टॉयलेट नहीं था, घर में गैस नहीं था, घर में बिजली नहीं मिली थी, नल से पानी नहीं मिला था, खाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। ये 10 साल के अंदर ही, सिर्फ 10 साल के अंदर हर एक को बैंक अकाउंट, हर एक घर में नल से जल, हर एक घर में शौचालय, हर एक घर में गैस, और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की है। और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोगों को भारत के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचाए। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया, और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए, हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है। ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, जो अपनी भाषाओं पर तो गौरव करता है, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक चीजों को समाहित करते हुए विश्व के मंच पर भारत के युवा को खड़ा रहने की ताकत देता है। ये 10 साल के अंदर भारत सुरक्षित हुआ है। आए दिन बम धमाके कर जाने वाले पड़ोसियों को मैसेज दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का दम भारत में है। ये 10 साल के अंदर सालों पुराने मसले जैसे धारा 370 हटाना, 35 से हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, सीएए लाना, ढेर सारे यूसीसी लाना, ढेर सारे मसले जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत के साथ उसको निरस्त किया है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है। 10 साल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाएंगे। हम 3 हॉटस्पॉट से ग्रसित थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। मोदी जी के समय में ये 10 साल में कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों जगह पे लगभग 75% हिंसा कम हुई है और वहाँ विकास का शुरुआत हुआ है। और ये 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहले देश के विकास के लिए सिर्फ सरकारें लगा करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने महान भारत का संकल्प 130 करोड़ लोगों के स्वप्न बनाकर रखा है। और मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोग जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, तब महान भारत की रचना के लिए कटिबद्ध है और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर
आज इनके स्वप्नों को पूरा करा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। धन्यवाद। आपने मेरे एक ही सवाल में 3-4 जवाब दे दिए, तो ये माहौल, अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है देश के सभी, हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड, और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था, और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे, और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहाँ नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से, ये पूरी में वो पुरानी चीजों की आदी है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाएं। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी की बात बताता हूं। 2014 में मेरी पार्टी में जो चंदा आता था, इसमें से 81% चंदा जिसमें किसी का नाम नहीं होता था, 20-20 हजार रुपया कर जमा करते थे। 18 में ये 81% से 17% हुआ। 18 में एंड पे भी ये 17% पर रहा, और 2023 पर कम होकर 3% पर आ गया था। हमारी पार्टी ने इसको ट्रांसफर आगे किया था। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, इस स्ट्रक्चर को अपनाया है। ढेर सारे राजनीतिक दलों की सरकार होती है, अगर कोई एक राजनीतिक दल को पैसा देता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर विंडिक्टिव अप्रोच से अपने स्टेट के अंदर बदला लेता है। इसलिए एक व्यवस्था रखी थी जिससे किसने किसको चंदा दिया वो गोपनीय रहे, मगर इसमें गोपनीय नहीं रहता था किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना मिला। अब जो व्यवस्था होगी, इसमें किसने कितना दिया वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि सारा कैश में देना है, और किस पार्टी को कितना मिला वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि कैश से लेना है। और कैश से लेना तो छोड़ो, घर पे ले जाने की व्यवस्था भी इसमें से हो गई। और हम पर एक आरोप लगता है राहुल जी कि हमें बहुत सारा चंदा मिला है, ये मिथ्या है। 6,900 करोड़ 6,200 करोड़ हमें मिला है। इसके सामने 6,200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं। उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी 17 सरकारें हैं, हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। और एक काम के सामने चंदे का जो सवाल है वो भी गलत है, क्योंकि 2019 लोकसभा में हमें जो 6,000 करोड़ मिला, इसमें से 2019 लोकसभा के समय पर जो बॉन्ड खुले हैं, इसमें 3,071 करोड़ चंदा मिला है। तो आप जाहिर है, जब आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो कोई काम के सामने चंदा नहीं होता है। और विधानसभा के चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमें 2640 करोड़ रुपया मिला है। उस वक्त भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई काम नहीं होता है। तो 90% से ज्यादा चंदा बॉन्ड से
हमें कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मिला है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े धाराशास्त्री, जो ये पूरी सिस्टम के फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि वो भी राजनेता ही है ज्यादातर, चंदे वाली, कैश चंदे वाली व्यवस्था का फायदा उठाने वाले, वो उनका आर्ग्यूमेंट था कि इससे सरकारी नीतियां प्रभावित होती है। उनको ये मालूम नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट बनने के बाद कोई नीति आ नहीं सकती। तो ज्यादातर चंदा तो कोड ऑफ कंडक्ट के समय में हमारा आया है 90% चंदा। राहुल जी, इसको हफ्ता वसूली कहते हैं। खुद भी 1400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी को। ठीक है, तो फिर उन्होंने 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6,000 एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है। मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कहां से लाई, वो कहां से लाए हैं, एनसीपी कहां से लाई है। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित कर रहे हो, कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडी अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। जब पता चलेगा कि कहां से, जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चिट पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी। उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। एक चीज जो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बोला जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि काफी सारा करीब 14 कंपनियों का पैसा जो है करीब 4,000 करोड़, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने तब खरीदे हैं जब उनके वहां कोई किसी प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसी की रेड हुई है, जैसे कि ईडी या सीबीआई। मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है वो 6,000 करोड़ में हुआ हो जो घमंडिया गठबंधन को मिला है। हमारा जहां तक सवाल है, चुनाव के 40 दिन में हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि जिनमें रेड हुई है वो जरूरी नहीं कि उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया। हाँ, अभी आएगा ना, मैं कह रहा हूं। अच्छा, कल आप कह रहे हैं जब आएगा कल तो सारा दूध का आएगा, दूध और दूध पानी का का दूध, पानी। पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, उसका इंतजार करेंगे, वापस आपसे फिर उससे सवाल करेंगे। एक इससे लगा हुआ सवाल है, तो पूछकर इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है। ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है, और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, 95% काले धन वाले की है। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर। और ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया, कार्यवाही का सवाल मत उठाओ। तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया, वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया, वो बड़ा सवाल है। क्या समझते हो, जनता कुछ देखती नहीं है? तो क्या नोटों की गड्डियां भरने के लिए मेटाडोर लाने पड़ते, एक मेटाडोर छोटा पड़ गया, दूसरा मेटाडोर रात को 4 बजे लाना पड़ा। ये कहां जाने वाला था पैसा? राहुल बाबा बता सकते हैं देश की जनता को? ये 355 करोड़ जो कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े, किसके? इसका जवाब देना चाहिए उनको, और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे। ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी, और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और जहां तक सवाल है बीजेपी के नेताओं का सवाल है, इस देश में कोर्ट है। जब हम ऑपोजिशन में थे, ढेर सारे पीआई लगाए थे आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए थे। 42 पीआईएल हुए थे। 42 पीआईएल में से 35 में ऑर्डर हुए थे, और आपकी ही सरकार ने आपके खिलाफ
एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ी। अगर हिम्मत है तो जाए कोर्ट में। और मैं कहता हूं ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस एक कांग्रेस पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, भ्रमित करने के लिए कह रही है। वास्तविकता है 23 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर 25 पैसे का आरोप देश में आज तक कोई नहीं लगा सकता। ये वास्तविकता। तो अमित जी, क्या आप देश की जनता को आश्वस्त करेंगे कि अगर इस तरह के कोई नेता जिन पर कार्यवाही चल रही है वो पलटकर बीजेपी भी ज्वाइन करते हैं? भाई आश्वस्त करने की जरूर नहीं भैया। राहुल, तुम भी पत्रकार हो, तुम चले जाओ कोर्ट में कि फला नेता का ये काला भ्रष्टाचार है, आप इस पर कार्यवाही। कोर्ट सबको ऑर्डर देती है, तुम ही चले जाओ ना, छोड़ो इंडिया अलायंस। मैं सिर्फ सवाल पूछने तक ही सीमित रखता हूं अपने रोल को। अगला सवाल अमित जी, जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरता जा रहा है। हमने पहले भी देखा है, पहले भी चुनाव हुए हैं, शुरू में तो लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, ऑपोजिशन भी बड़े मुद्दों पर अटैक करता है, पर जैसे जैसे पास आता जाता है स्तर गिरता जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी को गोली मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह का जो डिस्कोर्स और वरिष्ठ नेताओं से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो सार्वजनिक जीवन में जीते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपसे पूर्णतः सहमत इसलिए नहीं हूं। ढेर सारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती है, जायज विरोध भी किया जाता है, विकास की बातें होती है, एजेंडे की बातें होती है, भारत के विकास की भी बातें होती है। मगर आप लोगों का ध्यान वो कंट्रोवर्शियल 1-1.5 मिनट पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि आपकी टीआरपी इससे जुड़ी हुई है। मेरे इंटरव्यू में से भारत का अच्छा क्या हुआ वो नहीं निकालोगे आप। सीए निकालोगे, 370 निकालोगे, ईडी निकालोगे, ये आपका काम है। खैर, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर मुझे जनता को भी बताना चाहिए। बात को पूरी सुनिए, सब अच्छी बातें भी होती है, ऑपोजिशन भी अच्छे विरोध के मुद्दे लेकर हमारा विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि देश में गाली गलौज की राजनीति हुई है, ये बात सही है आपकी। मोदी जी पर कुछ ज्यादा प्रेम है इन लोगों को, तो जब भी चुनाव आता है मोदी जी को गालियां बोलते हैं। मगर एक रिकॉर्ड है मोदी जी का 2001 से, जितनी गालियां ज्यादा पड़ती है, कमल इतना जोर से खिलता है, मोदी जी ज्यादा बहुमत पर। और इस बार भी यही होने, किसी के कहने से कोई मरता नहीं है। मोदी जी के साथ इस देश की करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है, जिसको गैस मिला है, घर मिला है, सुरक्षा मिली है, खाना मिला है, दवाइयाँ मिली है। कोई 1-2 लोगों की बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जिस व्यक्ति को देश के करोड़ों लोगों की दुआ हासिल हो, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़। थोड़ा बड़े मुद्दे की ओर जाते हैं। ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी है। कास्ट सेंसस के बारे में आपका क्या मत है, और जितनी आबादी उतना हक, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कमोबेश अभी भी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी। आप देश की संसद का अभी का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है। परंतु का अधिकार नहीं है, क्योंकि काका साहब कालेलकर कमीशन, जिसने सबसे पहले बीसी को रिजर्वेशन की बात करी थी, वो कमीशन कम से कम उसको ओपन नहीं किया गया। इसको भी कांग्रेस थी तब तक उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा, और जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, नहीं इनके पिताजी क्या बोले हैं, परंतु देश की संसद में 1 घंटा और 45 मिनट तक ओबीसी को रिजर्वेशन की खिलाफत, पानी पी पी कर 6 बार पानी पिए वो, बीच में पानी पी पी कर राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं, टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, 2-3 उनको मालूम नहीं है।
इसलिए वो फंसते हैं। अभी बात कर रहे थे कि एक शक्ति है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, को मोदी जी ने उस पर हमला किया और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको ना हमारी परंपराओं का जानकारी है, ना हमारी परंपराओं का सम्मान है। शक्ति का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर सालों से 10,000 साल से मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। माँ के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता, बहन के प्यार से, स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की मातृशक्ति चट्टान की तरह खड़ी है और राहुल जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो अभी 2-3 दिन में जितना भी देश भर की महिलाओं ने ठाना है कि इस बार राहुल गांधी को जरूर कराना है चुनाव में ये मैंने सब जगह से पाया है। और मैं देश की मातृशक्ति का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद देश की महिलाओं के कब से आकांक्षा थी कि नीति विषयक निर्णय करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओं बहनों की हिस्सेदारी हो, और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में शक्ति का सम्मान किया है। और इस संसद के बाद 20वीं संसद जब आएगी तब आप देखना 33% माताएं बहनें अंदर बैठी होगी। पूरी दुनिया देखेगी भारत की मातृशक्ति की शक्ति क्या है और उसका सम्मान कैसे हो। नहीं समझ पाए। अमित जी, एक मुद्दा जो आपके भी काफ़ी करीब है, CAA का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया CAA के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। CAA पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, जब किसी सच्ची फहमी तो जो पार्टी इन पावर होती है इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित की ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि CAA से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। CAA से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। CAA नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है। उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि CAA थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। CAA नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक CAA का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लीमेंटेशन है। मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से देंगे? घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जुबान सिल जाती है? इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वोट बैंक को हट कर रहे हो।
शरणार्थी जो होता है वो प्रताड़ित होकर यहाँ आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान में निजाम बदला, सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, सैकड़ों हजारों सिख भाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर यहाँ है। क्या करें उनका? वो घुसपैठी है क्या? हर सिख भाई बहन का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका। हर हिंदू भाई बहन का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसको घुसपैठी करार देना ठीक नहीं है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो पहले से यहां रह रहे, आज रह ही रहे हैं जी। कहां लोड डालने का सवाल है? और केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे? केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी हर एक को 5 किलो अनाज दे रहे। ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं, कहां नई कोई व्यवस्था करनी? इनको अधिकृत नागरिक बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमि का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है। और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करनी चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पे टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी। भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी। और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी। परंतु ये मोदी सरकार है, 1 इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता। ये हमारा भारत की जनता को वादा है। अमित जी, एक सीए से रिलेटेड सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है जी। राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है। एनआरपी चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तब। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया। मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जीन्स भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती, और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे? अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी देश के सामने सीए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370 अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है, और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद। और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो।
परंतु कानून एक होना चाहिए, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने यूसीसी को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू सब ने स्वीकारा था। सारे कांग्रेस के नेता थे, सबने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था, जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। डीएमके ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, सीएए को रिपील करेगी। किसने कहा है? डीएमके। डीएमके कहाँ पावर में आनी है भाई? जी, डीएमके का सवाल ही नहीं है, वो तो इसीलिए ऐसा। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। इसके हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 उन्होंने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है जी। और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मार। नहीं काटी। देश की पॉलिसी के है कि होना चाहिए साफ जी। मगर राहुल बाबा, आप चिंता मत करो। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, दूसरी बार इस देश का विभाजन नहीं कर पाएगी। कभी ये देश के टुकड़े हम नहीं, ये नहीं हो सकता। लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कहां से आप और उम्मीद देख रहे हैं। जैसे कर्नाटका में ढेर सारे
स्पेस है जी। बंगाल में हम बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में बढ़ सकते हैं, पंजाब में बढ़ सकते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, केरला में अकाउंट खुलेगा इस बार? भाई मैं आपको कहता हूँ, आप पिसमिल अकाउंट में मत जाओ राहुल बाबू। आप 370 गिन लेना, मैं उस दिन आपके शो पर आऊँगा और बताऊँगा कि हमने कहा था देश की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें भाजपा का कोई पराक्रम नहीं है। इस देश की जनता का स्नेह नरेंद्र मोदी जी पर है, हमारे नेतृत्व पर है, हमारे वो ही वोट में कन्वर्ट होगा, वो ही सीट में कन्वर्ट होगा और 370 पार हो जाएगा। तो आप ओडिशा के बारे में तो कुछ बताइए कि साथ में है या नहीं साथ में, अलग अलग लड़। पांडियन जी यहाँ आए, प्रधानमंत्री के हाथ में है। अभी तय करेंगे, इतना निश्चित जा रहे हैं। तो मोदी जी के प्रति जो प्यार है वो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उष्मा के साथ और विनम्रता के साथ उसका स्वीकार भी करते हैं, इसको फील भी करते हैं। सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में क्या होगा? निश्चित रूप से लोग हो सकता है पहले तय हो जाए कि हम साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। साथ में जाएंगे तो बीजू बाबू नेता है, स्वाभाविक रूप से हम साथी के रूप में लड़ेंगे। अकेले जाएंगे तो सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे। देखिए, गठबंधन हमेशा जरूरियात के मुद्दे थे, इसमें इश्यू बेस्ड समर्थन पार्लियामेंट में दिया। समर्थन की खूबसूरती है कि विरोध हर मुद्दे पर नहीं होता है, जो मुद्दा देश हित में होता है इफेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहिए, सबने करना चाहिए। 2 प्रदेश जहां पे पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी, नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहां थे वहां ही थे जी। गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला। पर 16 सीटें उनको दे दी आपने। नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का नीतीश कुमार जी से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया। कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा? अभी कुछ नहीं तय नहीं, हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग। राष्ट्र में देखें तो आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजीत पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं। तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर? हम 41 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। ये जो गठबंधन या गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम एकनाथ शिंदे को उनका उचित
अजित पवार को उनका, आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते, वो तो सरकार में थे सब। जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो तब पार्टियां टूटती है, इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? 30 के आसपास आप क्या क्या हुआ है, मगर स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी होगी। और उसके बाद शिंदे और उसके शिंदे सेना और उसके बाद अजित पवार। हाँ, कमोबेश यही होगा। कह रहे हैं लोग कि नंबर ऑफ सीट अभी तय नहीं हुई। पंजाब में क्या है, अकाली दल से कभी हाँ है ही नहीं, नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये हम देते, वो काउंटर, ये चल देखना चाहिए। तो एनडीए संपूर्ण बने, जनता और हमारे कार्य आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे, मगर अभी तो हम आमने सामने ही चुनाव लड़ेंगे। 2-3 सवाल इन्हीं मुद्दों पर। तेलंगाना में आप इस बार अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं? क्या पिछली बार से जिस प्रकार का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर दक्षिण भारत की जनता मोदी जी का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की इतना सकारात्मक उत्साहजनक दक्षिण भारत की जनता से मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत कि दक्षिण के सभी 5 राज्यों में हमारे और हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं। वहाँ संदेशकाली के बाद आपकी स्थिति, पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर ये वहाँ पे आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए, बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0, आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता 1 करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है। ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है। डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है?
क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है? क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया? केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है। बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ईडी पर भी हमला हुआ था। ईडी पर हमला तो छोड़ो भाई, अलग बात है। मैं जिन्होंने वोट दिए वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं। उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं। जी। बंगाल की जनता ये सब जानती है। मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दो। इस बार मोदी जी कश्मीर काफ़ी दिनों बाद गए। आर्टिकल 370 अपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहाँ पे। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि वहाँ चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे? कश्मीर वैली में कोई अकाउंट खुलेगा? देखिए, कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव कराया। तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो। जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है। ये 370 का हवा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को 5 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य का बीमा मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद थिएटर खुले हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये लोकतंत्र की बहाली के कारण हुआ है। जी, एक बार कश्मीर की जनता ने हिम्मत करना चाहिए। जिन लोगों ने 75 साल तक कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखा, संवैधानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने केंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा, उनको दंड दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर दिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, परंतु घाटी में एक बार ये 3 परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर में चुनाव कब होंगे? ये मैंने आपसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है। इस बार बोला गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही किया है सितंबर तक कराने का। जी, तो उसके तो आउटर लिमिट है, सितंबर के पहले हो जाएंगे। एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये अगले उसमें 5 साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित है, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना। 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है।
क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे, और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं। जी, बस कुछ सवाल, 2-3 सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज़्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से 73 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज़्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में? सीटों के नाम पे न पड़िए। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है। इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपसे हर बार जब इंटरव्यू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बातें होती हैं। गृह मंत्रालय के कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो 5 साल में, जो आप सबसे बड़ा मानते हैं। देखिए, कोई अचीवमेंट बड़ा या न छोटा नहीं हो सकता। हर अचीवमेंट की अपनी जगह पे एक अहमियत होती है। छोटे से छोटा फैसला बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पे। जैसे मैं कहता हूँ, जब 5 किलो RDX पकड़ा जाता है तो लोगों को लगता है, इतना कॉलम आता है कि आज 5 किलो RDX पकड़ा गया। अगर वो न पकड़ा जाए तो 2000 लोग बम धमाके में मारे जाते हैं। तो ये तो नज़रिए का सवाल है। मगर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर शांति, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज़्यादा समझौते कर 9000 से ज़्यादा उग्रवादियों को सरेंडर कराना, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त कर देना, नारकोटिक्स पर कठोरता से लगाम खींचना, और ढेर सारी चीज़ों में देश की आंतरिक सुरक्षा को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो मोदी जी का एक देश भर में मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में, इनके सीधे गाइडेंस के तले गृह मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। ढेर सारे काम हुए हैं, परंतु मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय, हर मंत्रालय में आज़ादी के 75 साल में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो ये 10 साल में हुआ है, और 10 साल में देश की सूरत और सीरत दोनों बदली है। देश को दुनिया में सम्मान मिलने लगा है। आज भारत क्या बोलता है वो मैटर करता है। भारत का पासपोर्ट लेकर कोई जाता है तो सम्मान के साथ उसको देखा जाता है, और भारत के भविष्य पर न केवल भारतीय, पूरी दुनिया को विश्वास है कि आने वाले 25 साल भारत के 25 साल है। मोदी जी जब देश की जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं, तब हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। विपक्ष के पास ना ट्रैक रिकॉर्ड है, ना एजेंडा है, ना नेता है, ना नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्क्रीट एजेंडे के साथ महान भारत की रचना की कल्पना लेकर आप सबके सामने आ रही है। आप समर्थन करिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद दीजिए तो थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, 400 पार करा दीजिएगा। इतनी ही मेरी आप सबसे विनंती है। धन्यवाद। अमित जी, आप दिन रात काम करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, आजकल दिन में सुबह रात 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। आज हमारे साथ आपकी धर्मपत्नी सोनल जी भी यहाँ हैं, तो घर के लिए समय कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये वर्क वाइफ बैलेंस कैसे होता है? देखिए, वो कोई सार्वजनिक बात नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता। परिवार मेरे लिए समय चुनकर निकाल लेता है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है, और इसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सवालों के जवाब दिए, 1 घंटे हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Home Minister. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for our esteemed guest this afternoon. In fact, he took the time to dispel all rumors and dismissed all criticism around the contentious Citizenship Amendment Act
refuting allegations that this law is divisive or discriminatory as alleged by the opposition. The Home Minister also accusing the opposition of spreading lies and information. Ladies and gentlemen, kindly remain seated. There is a lot of security. I'd request each one of you to not leave your seats and please take your chairs for the next session. We're just about to begin. The Home Minister, in fact, made it very clear that the opposition is indulging in fear-mongering, and he is extremely confident, as you heard from himself, of surpassing the 400 mark, with the BJP winning and attaining a massive 370 seats. All right, ladies and gentlemen, please remain seated. The security will not allow you to leave the hall, so I'd request you to kindly remain seated for our next session. I can see a lot of you are already headed towards the exit, but I'd request you to kindly remain seated, please. I just request everyone to remain seated. The gentleman there at the back, thank you. We have very tight security arrangements, as you can understand, because of the presence of the Home Minister and later the Prime Minister coming in. So we just request you to kindly bear with us and the security arrangement. This is all part of the standard security protocol, and we do appreciate your patience and understanding as well. Okay, there are a lot of people at the door of the exit. I'd request each one of you to please come, take your seats. Our next session is just about to begin. All right, we are ready to start our next session. Let's just shift our focus from politics to something that is very close to our identities. Ladies and gentlemen, let's talk about clothes, which is one of the most intimate and personal aspects of our lives. In fact, people tell their stories through the clothes that they wear and the finer nuances of fashion as well. Be it clothing, be it tailoring, be it garments, grooming, what are the new trends, the shades, falls, accessories, colors, and all of that. In fact, even I was thinking about my clothes for the last 2 days, but that is the power of clothing. It often lies in the identity garments, which gives us the freedom that it brings. Our next session, ladies and gentlemen, is about India's rising sartorial sway on the world map. Please join me as I welcome celebrated and very respected fashion legend Rahul Mishra for a session on crafted cultures, India's global influence in conversation with News 18's Sonal Mehrotra Kapoor. Sonal, over to you. What a pivot, right from the Home Minister to the fashion sort of legend as we know now, Rahul? Long way to go. A long way to go. All right, so ladies and gentlemen, we have Rahul Mishra with us at the Rising Bharat Summit, not because he's the first ever Indian designer to showcase at the Paris Couture Week, not because he's the first Indian designer to have won the very prestigious Woolmark Prize in 2014 at the Milan Fashion Week, and dare I say, not because his Willing Connection was sold across the globe in stores all over. He's here with us today because he does something very unique to luxury fashion. He makes it mindful. So Rahul Mishra, take us through what and educate us mostly on what exactly is mindful luxury. So thank you News 18. Thank you for amazing introduction. And definitely, I think
last conversation with Honorable Home Minister had been, very inspiring, and at the same time, a lot of things which I've been realizing also became enablers, whatever he was quoting, in doing what we do right now. So as a fashion designer or as a designer, my first thing is I have to design something, do something. So what we do is we try to concentrate on a process which is slow. When process becomes slow, it becomes participatory, and then people can participate, that creates employment. That is something which becomes far more powerful as an idea. Because I always say, any product, whether we talk about garment or we look at clothing or anything, I think there are always 2 ways or 3 ways to designing it or manufacturing it. One is always go to the most sustainable and most beautiful way. So I think slowness, what we bring about creating anything, creates employment, brings our people back to the villages, and it allows them to stay there. And that is the most amazing thing. That is. So, when you see the celebrities, global celebrities across the world descend in India, it could be for a pre-wedding celebration in Jamnagar, or it could be for NMACC. When they come here, you see them in really fabulous Rahul Mishra clothing. You see those pictures, as we have this conversation over here, from Mark Zuckerberg to Selena Gomez to Zendaya. We've seen all of them wear Rahul Mishra clothes. But Rahul, the interesting part and the connection of how do we go from that glam, that glitz, that really wow quotient from the ramp, and how do we translate that into roof over somebody's head, a karigar, a house and education for their kids? How does that spectrum happen? Put that into context. Rahul, for those of you who don't know, by the way, takes it all back to his roots in UP, to our hometown, Kanpur, by the way. So that's where it's all going, and those clothes that you see on international celebrities are being made there, in UP. UP along with West Bengal and everywhere. So first thing what we did is, because ultimately we have to get into product manufacturing. So what we did is we decentralized the processes. And very first time when I started working hand embroidery, I came to this Dharavi and Jijamata, all those areas, Mumbai. And we realized these working conditions or the way people are working are not really, really good. I'm talking 2012, 2013. How we can make sure that places are much better, people can have much better lives. Nobody should be living in those areas also. Working is a complete separate thing altogether. We have some pictures of before and after from there now. I think one of the most unfortunate thing which happened, I'm not going to get into politics of it, but I really feel is about like villages somehow in terms of employment, in terms of work, probably could not catch up to the cities. So a lot of population of villages started migrating to city. Even the drivers who we have at a home, first thing which brings them dignity is if they can make a pakka house in their village to show to the society that they are doing well in life. And for this, they have to slog and live in a slum area, live in a area, no clean water to drink. They can't even take shower every day and all that kind of thing. And no nutritional food also at the same time. So what we started in 2012, and now because of, this, I should say Jan Dhan Yojana, and because of what is happening in the villages, like recently 10 days back I went to my village also, I was surprised to see actually all nulls over there and they all are working, which is amazing. So now villagers, they want to live over there. For us 10 years we have been doing that. All these guys, they work from the villages, and they all produce the pieces which probably Mark Zuckerberg is wearing, which probably... So you're saying you're not bringing the karigar from UP, from West Bengal to Delhi and Mumbai. You're taking work to them. This is sort of work from home, is it? So actually, it's a bit like hybrid model, because we have got 300 people who work with us at the studio in Noida. Yeah. And together, all of us are able to create employment for another 1,200 people, full-time employment. Wow. All across India.
Yeah. So, and my dream is to be able to create, I think, jobs for 1 million people through our fashion initiatives, because we create clothes which are extremely slow. Like, for example, the Zendaya sari or Mark Zuckerberg shirt which you see over there, or what his family was wearing, these clothes are good enough to get employment for 15 people for 15 days. Hold on. 15 people for 15 days worked on that one shirt. That Not shirt, I'm talking about like both the couple. Both the couple, on what Mark and his wife were Yeah, wearing. yeah. Wow. Wow. So I think the process of slowness becomes far more engaging, far more beautiful. And that is something which has been one of the highlights of our career. And also the reason, because I always say, like, how we can think about, so I often talk about this, that instead of seeing primary objective of fashion as consumption alone, we try to create a system that creates participation from people, participation from people. Because as a designer, it's very easy for me to think about a design, digitally printed, it's going to be a half-an-hour job. When you machine embroider, it's going to create 50 hours a job. But when you do hand embroidery on the same piece, it creates 5,000 human hours of work. So that is where fashion or a product become far more powerful. And I'm also sharing something, like one of the key person, his name is Afzal Zariwala. He started working with me in 2012. He's again, a Karigar. Yeah, Karigar. Again, he was working, in West Bengal, leaving his village in Bonpur, in Mumbai, comes from West Bengal. 1984, he migrated in search of work, started doing embroidery, was living in slum areas in Mumbai. And he had a beautiful house over there, maybe some of the pictures are there. And what I've realized, when we started creating work over there, so they all migrated, all his people migrated back with him. And today, his daughter is studying in London. Oh, so wow. A guy who has probably That's the gentleman over not there, gone beyond, so this is a setup which he started in village. So every bicycles around, they all come around over there. They all have been part of Mumbai initially. And what is really powerful here is that, the kind of dreams which every day, this is his house, which was locked for almost 15, 20 years. He built it for his parents, could never live over there because who's going to get job over there? So this kind of engagement becomes very, very powerful for fashion. Indeed. To imagine that somebody who had to migrate in search of work, stay in the slums, and their kids now in London is indeed incredible. So congratulations, Rahul, for having done that. I want to sort of understand, this is India's moment in so many ways than one. It could be our financial market, it could be so many other things, it could be music, it could be art, and so is fashion. So many Indian designers we know are showcasing abroad, are being talked about, and we see more and more celebrities, global celebrities, don the Indian sari with a lot of pride. Yours, of course, has made waves as well. But particularly in France, is it true, can I just go straight to that, is it true that the French President Macron asked you to shift to the French countryside, that this is too much talent for India, we need him there in France? Is that true? Yeah, this is, I think this is obviously 6 months back I met him. 2018 was the first time he invited all of us for some French designers, some of the designers were from Japan, and they all are hand-picked elite designers over there, showcased in Paris. So he said this in an address that all of you need to shift, make France your home. And then personally also, when I met him 4 or 5 times, he had kept telling me, when you're starting a business or atelier or something in Paris. So maybe it's also a good idea altogether when you look at France. Obviously, my base is going to be in India always. Yeah. But yes, we are looking at doing something in France as well right now. Not bad at all. So as we come to the close of this session, let me quickly get some spicy comments out of you, Rahul. So you have designed you have dressed up so many celebrities, India and abroad. Tell me the one who's been the toughest
to sort of please, or which has been the most difficult brief to follow through? I think some of the most difficult briefs are now, which I got yesterday for some big movement. Oh, Obviously God. can't share that. So it's very open-ended, very beautiful idea. And some of the easiest has been even for the Mark Zuckerberg's family. So when they got in touch with us, there's hardly any time. We have to fly one girl with 2 suitcases full. We did not tell her who she's going to meet. And we were wondering, what if she doesn't return back and joins Facebook? So, but it was quite a breeze, when we were doing their clothes. You know, idea behind this, sometimes whenever, I do a lot of Western wear, but whenever these known people, when they get in touch with us, like President Macron, when we gift something to it, we gift him a kurta. You know, my dream is the way, I'm wearing jacket right now, we all are wearing Western clothes. They all came to India probably 100, 200 years back, and that's how we all are dressing up right now. Sari is such a beautiful piece. Maybe something sari inspired should become a staple for every nationality person, every person on the planet to wear. And they should have something. Similarly, a kurta, which is so comfortable, should be a staple in every person's wardrobe on the planet. And this is one small little mission which I have to achieve. So that's why there was no brief. When Zendaya wanted to wear, she's one of the most stylish, most talked about global icon. When she was coming, the first time we did one jacket for her, second time I said, you have to wear a sari. Yeah. There's nothing else. But give me a name, now, Rahul. Come on, give us a name. Tell us the most fondest memory. So recently, I must say, when Rihanna was coming to India, sometimes unachievable targets are given. So I could not do that because we decided to do something. But then within 2 days, there was a fittings in Milan. Impossible for hand embroidery. Most of the times, because we only work with hand, most of the times it's the only problem is that we cannot turn around things really fast when we work with slow idea. Right. All right, with that, we're going to wrap up this session. But Rahul Mishra, you've made Mark Zuckerberg, who wears only grays and black, wear the Bengal tiger with pride. You've made Della, you've made Selena Gomez, who wear the most chicest clothes, get a bit of India in them. So congratulations on that. And congratulations on everything you're doing. And please do not move to the French countryside. We need you here, don't we, guys? No, I'm very much here. And thank you so much. Thank you, everyone, for hearing. Thank you. Thank you. Rahul Mishra, everyone. Thank you so much, Rahul. Thank you for coming and thank you for speaking to News 18. That was Rahul Mishra, luxury fashion designer. He's, of course, creating waves through his weaves, and he's also really famously known for his contribution to the Indian handlooms. He was also the very popular choice, in fact, of all those who were gracing the red carpet at the famous NMACC launch. So that was designer Rahul Mishra there for you, ladies and gentlemen. I'll just reiterate this very important bit of information. I know I have said that before, but I'd really request each one of you to kindly be seated through the sessions. That's only because of the security protocol that we have in place ahead of the Prime Minister's visit and his session later in the evening. I'd request everyone who are gathered at the entrance also to please come, have a seat and enjoy the next session, because it's really crowded at the back and it also causes a lot of disturbance to our guests who are listening and hearing the session. So really, really appreciate your cooperation and your understanding. I do understand that this can be quite a hassle, but this is a standard security protocol that one has to adhere to ahead of the Prime Minister's visit. I hope each and every one of you are enjoying the sessions thus far. We have a lot more coming up next. This is going to be our session that we have for you, and then we'll break into lunch so you can take a break. It has been an action-packed morning. I can understand each one of you being a bit exhausted, but trust me, the lunch is going to energize you, and we have some great sessions and stimulating talks ahead. So let's not waste time. Without further ado,
The risk-reward matrix, ladies and gentlemen, in entrepreneurship is a well-defined trade-off. In fact, if more and more people, particularly the youth, they are willing to set off on their own, it is a clear sign of the maturing of our society on the entrepreneurship ecosystem scale. In the modern era, the success of entrepreneurship is just more than a function of markets and products. The brightest, the most promising enterprise ideas comes from the capability to spot problems, but most importantly, find solutions at scale. As Peter Thiel, who founded PayPal, says, tomorrow's champions will not win by competing ruthlessly in today's marketplace. They will escape competition altogether because their businesses will be unique. We are absolutely delighted, ladies and gentlemen, to have amidst us 4 such people who have been there and done that. Please put your hands together as I welcome on stage Harsh Jain, CEO and co-founder Dream 11 and Dream Sports, Ritesh Agarwal, CEO Oyo Rooms, Virendra Gupta, founder and CEO Daily Hunt, and Upasana Taku, who is the CEO for Mobi Quick, for a quick session on India's Techade, a catalyst for Viksit Bharat. And joining us is News18's Chandra R. Srikanth. Chandra, thank you so much. Over to you. Kindly welcome the guests and begin the session. Good afternoon, everyone. It's always challenging to do the session just before lunch because we are literally, standing in the path of you and some delicious food put together here at Taj Palace. But I promise you, this is going to be a short, sweet and insightful session. It has some of India's most exciting startups and entrepreneurs. In fact, we heard Home Minister Amit Shah as well make a mention of startups. He said startups dhoom macha rahe pichle 10 saal mein. And PM Modi was at Startup Mahakumbh this morning, where he said there are 19-year-olds running businesses worth tens of thousands of crores. Ritesh, I don't know if he was talking about you. If you're still 19 or 21, I don't know. But let me just start by getting each of your take on the amazing, decade that was, and what can we look forward to in the next 10 years? Because startups are clearly mainstream today. We had just 1 unicorn in 2011. We have 113 now, and 100,000 startups in India, which is humongous. Harsh, your own thoughts of how you've seen this evolve? We started in 2008, so we've actually been through this journey that you're talking about. And initially, even when we were starting out as a startup in India, startups weren't cool. Today you have to be a little crazy to start up. You have to leave a salaried job. You have to take that risk. You have to throw it all on the line. But I think that today, if you ask the youth, if you ask people, it's changed completely. Yeah. Back like 10, 15 years ago, I remember being on calls with some of our potential employees as parents. And you have to convince parents that this startup is okay, that it's okay to leave a MNC job and come and join a startup. Today, parents are not just okay with their kids joining startups, but they are okay with their kids starting up. India has come a fantastically long way from 10, 15 years ago, where investors were scared to invest in an Indian company. Today, investors and entrepreneurs are saying we will only have a parent company in India. There are so many of us who are looking to flip. Reverse flip, that's flip. right. I think these are like very important outcomes of the importance that the government has given to Digital India, Startup India, ease of doing business, and these outcomes actually showing the true results. Right. Ritesh, did you have trouble finding a bride because you're an entrepreneur? Look, first off, thanks for having me here. Always great to see you. And I must say that in the startup ecosystem, we've all sort of, I feel like, grown up together. I've seen Harsh in the early years. I've seen you growing up in the startup ecosystem and many others. So I feel like personally, I'm talking as if I've been in it for decades, but it just feels like that. See, I'll answer your question specifically in a short while, but my perspective is that globally, everybody says that India is the bright spot in global economy. I think India is the brightest spot in global startup economy.
because we are now what's happening... the third largest startup ecosystem in the world. Yeah, and in my view, not just the third largest, it's probably the fastest growing, which means that we are not far away from staking claim on the second very quickly and eventually, hopefully, go for the big one. So I think before India becomes among the top 3 economies, I believe that India will also become probably the top 2 startup capitals in the world, which is a big transformation that we are trying to see and shows how India's economic rise is deeply connected to the India's startup rise as well, and in similar perspective. And look, I think I started in 2013 and 2014. And Startup India started in 2016. That is when the first big Startup India event happened. And Mom looked at television, on national television, for the first time, Honorable Prime Minister talking about startups and so on. Before that, she used to think I was in, like Hindi mein kehte hain ki tum galat sangat mein pad gaye ho. She used to say, ye startup wale tumhe galat sangat mein le gaye. It's the wrong group of people. You should not surround yourself with them. You should go and meet your other friends who are going to university. But that day she felt that if the Prime Minister is talking about startups, then must be something good that's happening here. So I told doing something right. I told her that your threshold is so high that you need to see this. But look, the question to your point on Bride, look, I and Geet know each other for over 10 years now, so that was not that much of a trouble. But I heard from my friend Anupam at Shadi that nowadays entrepreneurs are a pretty premium sort list in the wedding matrimonial websites. They are what IT employees used to be before in the marriage market. I hope that also demonstrates more interest among, just generally every ecosystem, because I believe that if you see countries like that of Japan, US was civil war driven, and Europe used to be the most dominant economy in the world. But entrepreneurs such as Vanderbilt, Henry Ford, people like those are the ones who built America into becoming a world leader today. So I believe the entrepreneurs that are growing up today, who are the 19-year-olds today, will be the ones leading the Indian economy in the future. So I'm excited about that. Right. Virendra, one thing that's often said about India is we are great in terms of the number of users. I mean, we have, 800 million internet users now. WhatsApp itself has 400 to 500 million users. So we are great in terms of user count, but we are still far behind when it comes to monetization. It's very hard to make money in India. Do you see that changing as an internet entrepreneur? So I think startups is not about making money in 1 year or 2 years or 3 years. It's a journey. Harsh and Ritesh both have spoken that they have been building this company for decades, right? Harsh is hugely profitable. So, but I'm saying he has been building it for 10 years, 10, 15 years, right? So I think one misconception which people have about startups is you launch a startup and tomorrow you're going to be a $1 billion company. The news which you see out of a $1 billion valuation or a couple of $1 billion valuation is startups which have been plumbing and doing hard work for 8 to 10 years. So that's one very big thing. I think second thing is, I would say when I started Daily Hunt, people used to say, does Bharat need internet? Does a Hindi-speaking user need an internet? Does a Kannada-speaking user need an internet? No, VCs were so much averse to funding any business which is serving Bharat. So there was a lot of, naysayers that point of time. The same naysayers are talking right now that India has a lot of users and they don't have monetizability. If you look at the macro picture of India, I mean, our GDP per capita is growing leaps and bounds. We are going to be a 5 to 7 trillion economy in few years. And businesses which put and plumb right now, they will reap the benefits of when the economy grows up. So I think it's a game of patience. India is the fastest growing GDP market in the world. As Ritesh said, India is the startup capital of the world, I would say. You go to San Francisco, you go to Europe, you don't find the energy which you find here. This is primarily because people in tier 2, tier 3 cities are all talking about startups. Every engineering college, every MBA college has an entrepreneurship cell. There would be at least 60 to 70 accelerators across the country who are breeding startups. So the energy, the aspiration to do well in the world is just infectious, and India is a place to be in. That's an amazing insight that, this is not a top 6 cities or top 8 cities trend, but it's
really reached Bharat, even in terms of entrepreneurship cells and starting up at the college level. But Upasana, you cannot talk about startups thriving without mentioning the initiatives from the government, you know, be it the JAM Trinity, right, Jan Dhan, Aadhaar, or more importantly, all the DPIs in place, from eKYC to UPI to all the building blocks. I mean, we've seen a significant leapfrog because of that. In fact, we had the global CEO of Visa yesterday, and he said he's asked his employees to take pictures of sound boxes in India so that, you know, he can show it to his global teams on the kind of innovation that's happening in fintech. It's on a different plane altogether, the use cases and the innovations. Take us through the role that DPI has played, and what role will it continue to play? Because now we are seeing account aggregator, we are seeing OSEN, which is again going to play a huge role in credit. We are seeing ONDC, which is, you know, an e-commerce challenger. What role is all of this going to play? So firstly, thanks for having me here, Chandra. A pleasure to be here with all my very esteemed panelists. And, you know, the question that you asked, I think the government in India has had a huge role to play. And within the government, I would say the central bank, the regulator, Reserve Bank of India, and all their different divisions, which have been at the forefront of this fintech innovation. And of course, that's how it, you know, sparks. Has UPI been a game changer for India? Obviously it has. But even before UPI, has Aadhaar been a game changer for India? It has. And everything else that you mentioned, you know, the fact that today you can buy real estate and everything is based on your Aadhaar and not necessarily based on your thumbprint or your signature. I think as a country, loans are being given, investments are being made completely digitally, right? Forget about the fact that we move money at the speed of you know, a few milliseconds, which was not the case in the most developed markets. So absolutely, I mean, having been a participant of the fintech industry for the last 14 years, before the word fintech was coined is when we got started. And much like my co-panelists were saying, have done, you know, answered all of that questions, that does India need digitization in payments and then other financial products? Or, you know, convincing parents that, you know, why is this mission so important? So I think what I would like to say is that today, while India has about 800 million internet users, from a fintech perspective, the transacting base is still around 400, 450 million. So from that perspective, it's still a very high growth opportunity, because in the next 5 to 7 years, this number will double to 800 million transacting users. And that is where all of these things come in, that the user will have an Aadhaar, do a KYC, and then will get access to all the financial products, whether in their personal capacity or for their small business. And, you know, keeping in mind that India is such a fast-growing country from a GDP and economy perspective, I think that our sector is going to sort of be an evergreen sector from that perspective, because everything said and done, financial products even today are reaching only the top 150 million Indians. And from an enterprise perspective also, it's only reaching the large enterprises and the upper echelon of the SME base. So, you know, there's a long way to go for the QRs and the sound boxes and the soundbox backed merchant loans that have still to reach, you know, 50, 70 million merchants in India. And I say that all of the things that have happened via DPI with government and regulatory intervention have been extremely solid and positive in this making of this ecosystem. Right. And I see a lot more is going to happen in the future. And I'll go one step ahead and say that financial technology innovation in India is been so strong in the last 5 to 7 years. The first 10 years, the ecosystem was getting built. Last 5 to 7 years, we've seen business models being made out of that. And so it's been a, you know, how to build a sustainable business on top of this fintech. So our tech stacks are so strong. Not only will these homemade, made in India companies serve the Indian consumer and the Indian business merchant base, these technologies will also go global and take over the dominant financial technology provider in other markets as well. And that's something that we've already seen with NPCI, where, you know, they're taking UPI to different, they're exporting it to different markets. But Harsh, you know, we spoke about the decade that was, the last 10 years, all the different triggers and innovations. What do you think is going to be the biggest tipping point for the coming decade?
And the second part of the question, the government has done a lot in terms of encouraging entrepreneurship. But now and then we see a lot of confusion when it comes to policy, when it comes to regulation. We have seen this across sectors, whether it's sports tech, gaming, fintech. I think, fintech entrepreneurs are always wary कि आज कौन सा circular आएगा RBI से. But what needs to be done on both these fronts according to you? So I think some of the tailwinds that we're seeing is obviously in the last few years we've seen the geo effect, right? Yeah. Just literally, the government policies have helped enormously with Startup India, Digital India, but there's also been this geo effect of getting almost 850 million people, getting fast speed internet. Gone are the days where you get excited about 1 Mbps. Now I get 30, 40 Mbps on my phone in my moving car, right? It's unimaginable from like 5 years ago. I think to answer your question, there's a couple of new technologies and platforms that can really push us forward. The standard point is obviously AI. There's no discussion without Gen AI. Without mentioning AI. But I think 5G and, we're talking about satellite internet now. I think internet is also going to evolve to a point where we get connected appliances, Internet of Things actually become a reality. You start seeing people having internet in the middle of nowhere. Today, you still have to be near a cell phone tower, right, to get internet. I think that's going to keep moving away. The semiconductor push that the government is doing is phenomenal to make India self-reliant on something that's such a critical component of our future. But I think to answer the second part of your question, right, the way India has moved forward has been phenomenal to see. I think that we are now getting more and more self-reliant on our own. In fact, going back to Viren's point, Dream11 has 75% of our users coming from outside the top 100, 115 cities in India, outside tier 1, tier 2. So what we are seeing is this real Bharat. When they say Bharat, all our kids play football, for example, right? So we think football is growing in India, which it is. But India is still very much a cricket market. The same way when we talk about India and all our likes and dislikes, we underestimate the power of Bharat at a local scale. We're also seeing this entire, from all the regulations that have come in, to answer your question. Yes, of course, regulations have come in, and many times regulations hit us in the short run. We've been having that as well. But I think that every disruption in every industry, in every continent, in every geography, this is not an India story. In every country, disruptors will come and disrupt industries. As they grow, they are allowed to continue growing. When they reach a certain scale, now whether that be e-commerce, whether that be ride sharing, whether that be even Airbnb in the US, I think just like for us, gaming has reached a place where there's 40 crore users gaming in India, where there's 400 companies and 100,000 jobs, 1 lakh jobs that are highly skilled. The government has stepped in to switch from a disruptor to a fully regulated entity. And we fully welcome that. Most of the time, regulation will have some short-term pain as the industry grapples with the government on creating a way that doesn't stop growth, but also allows the bad operators to be, wiped out and all the good operators to continue. And there will be some growing pains in that. Fair point. Regulation usually follows innovation in most major markets. And that's okay. But the Dream11 stat is amazing that so many users coming from smaller cities. And I remember you mentioning that a lot of women are also taking to gaming. We've seen actually 80% growth in women playing year over year. We are seeing our, on a lighter note, for any RCB. The low base effect hai na? The number of women are so small, the 80% growth hoga. I fully agree because sports fans in India are so dominantly male. We need many more women sports fans. I'm sure the RCB win will make more women take to game. I was just going to say on a lighter note, you have the RCB women showing the way, right? Of how this can happen. Who knows if the boys win this year? No, not Mumbai Indians. But Bangalore finally won a cup.
Ritesh, we've spoken about the good things, the tailwinds, but let's also talk about, governance issues that have rocked startups in the last year, from Byju's, then the regulatory concerns around Paytm. All this does make foreign investors nervous about what are we getting into in India? Is this a fair market? Is there rule of law? Is there stability? What should startups be doing more to, assure foreign investors, domestic stakeholders? देखिए, I want to just conclude on Harsh's point before I respond to this. मुझे लगता है कि in startup language, 0 to 1 of Indian startups was 2016 to 2018, when the rapid ascent of startups happened. 1 to 10 was 2018 through to 2022. We went through various highs and lows, but we went through rapid growth as well. I think what got us here will not get us to the next from 10 to 100. So Uspe, this morning I was, of course, like many other entrepreneurs, very intently listening to Honorable Prime Minister's speech at Startup Mahakumbh. And he mentioned Bharat AI में दुनिया का नेतृत्व करेगा. Yeah. So मुझे लगता है कि the AI, and I'm trying to make an acronym because we're talking about sports. I think in AI it is Advantage India, for sure, because we have engineers, we have the product managers, we have implementation. So infrastructure ability we have good is proven by the JAM Trinity, and Harsh was mentioning that earlier. I think implementation is now the big opportunity, that how many developers from India are writing code and creating the best implementation of AI, and I feel that India offers a huge market domestically. Whether you pick it, like in our industry, right? You pick spiritual tourism, you have probably the world's biggest spiritual tourism market here. You want holiday destinations, you have the biggest holiday destinations here. You want urban cities, that's also here. That will allow us to do India for the world opportunities, which I think will create Indian leaders for the globe in times to come. To your point on governance, look, I think it's a part of growing up, coming back to the 10 to 100 story. Today, most of our companies have majority, if not all, independent directors. We are driving our business with decisions being made by people who are serious and have driven multinational companies historically. My view is that more startups are willing to be accountable not just to regulators, but also to their own stakeholders. I think their ability to make a positive impact will only get better. So my view is that it's a growing pain, but you will see companies, Indian startups, be probably in next 5-10 years learning from the pains as among the best governed, is my hope in times to come. Right. Interesting point on AI. Hopefully the AI mission will also mean we get those GPUs which are in demand globally. We're out of time, and I want to get just closing thoughts from Viru and Upasna. Do we also need to do more to ring-fence Indian startups like what China has done? This particularly came up during, the Google billing road. Just closing thoughts from both of you. I think our firm belief is that we should have a fair and playing field. It should be fair both to the local companies as well as to the international companies. Second thing is, when you frame a fair law, you need to be aware and have a context of the ecosystem of India particularly. Why do you need startups? You need startups to drive innovation, and you need and you need competition to give best service to consumers. The Indian context is very, very important, and I think we should not be ashamed of framing rules which are around Indian context, Indian context, because we have huge diversity of population, which have different level of incomes, and we need to serve multitude needs of culture and needs of people. I'm going to let you have the last word, Upasna. Yeah, I think it's a double-edged sword. It's one of the fastest growing economies in the world. Of course, it's going to attract dollars, both from investors as well as big tech and large global players, right? We have Amazon here, we have Google here, we have Meta here, we have everybody from tech over here. And of course, they'll be interested. So I think my thoughts are that we don't have a Google of India, right? We don't have a WhatsApp of India. WhatsApp has come from San Francisco to us here, and we are a large market for them. So I think it will be the case that we will use global products. And so to the extent that we want to have Indian product companies also serving not just India, but the global markets, we have to give them a chance to compete. So to that extent, I do believe, and Harsh and I are both on the IMAI Governing Council, I think we do believe that Indian orgs coming together and working with the government and regulatory bodies to say that should we have the right antitrust or anti-competitive
laws in place which are fair, which enable global players also to make a play, but they also allow Indian companies to thrive. Because before we have reached that 100x scale, if you have a 100-pound gorilla and trying to clean out the market, that's not going to really serve the purpose of Indian startups. So therefore, it's a heavy question, and it's a very tightrope of balance that one needs to frame. And I want to just say 10 seconds more to the question that you were asking. I do believe that we are now in that middle phase of the Indian startup revolution, right? The last 10 years were sort of the build out. We are in that middle phase where companies are going from being a toddler, teenager to reaching just that adulthood. So I think you will see some disruptions, but I think those disruptions will mean that startup founders, as they are coming now into the ecosystem and building, will not be going for growth at all costs. Right. They will have to realize that innovation is important, growth is important, but maybe for long-term sustainability, you have to slow down a little bit and also think about building within the guardrails, thinking about governance, Right. etc. And I think that's going to be great for the Indian ecosystem, because that's where valuable businesses are going to get created. Right. On that note, thank you all very much for talking to us on this session. These are some of India's biggest entrepreneurs. A huge round of applause for all of them. Thank you very much, Harsh, Ritesh, Viru, and Upasna. Thank you. Thank you so much, Chandra. Thank you once again to all of our guests. There was a fascinating discussion on India's startup ecosystem. Comes at such an important time when the Prime Minister also has just inaugurated the Startup Mahakumbh at the Bharat Mandapam, where he in fact had said that India's startup ecosystem is not really limited to metro cities, but it's also become a social culture. Ladies and gentlemen, it's time for lunch. It's time for you to take a break. I can see all of you now already up. But just a quick reminder, later today, the Prime Minister will be gracing us with his presence, and therefore there's going to be a very, very thorough and a strict security protocol as we break for lunch. I'm going to also request each one of you to vacate the hall for a security drill as part of the ongoing standard protocol. That will happen. You will have to leave the hall for some time. Please do cooperate with us, and please do cooperate with the security staff as well. Thank you so much once again. Enjoy your lunch.
कृपया करके हॉल खाली कर दें, ये आउटसाइड जितने लोग हैं हॉल खाली कर दें।
कृपया हॉल खाली कर दें आप लोग, हॉल खाली कर दें। जो लोग इक्विपमेंट वाले हैं वो एक एक आदमी रुक जाएंगे बस।